Okay. Good evening, everyone. Am I audible? Tell me, am I audible? Okay. Any doubts? Any doubts? Anyone? Any doubt? Yes, ma'am. Who is there? Abdul here. Okay. Actually, page number. Wait a minute. In classwork problem? No assignment. Assignment means that is the only classwork problem, right? There's no separate assignment, or a separate assignment is given to you or what? No. Actually, it's a classwork assignment only. Okay. Page number 16. Wait a minute. Let me open. Page number 16. Okay. Let me share the screen. Yes. Is my screen visible? Yeah, ma'am. Okay, ma'am. Page number 15. Not 16. Actually, I have done all these. 15. Okay. Kth largest element in an array. Okay, this question. Yeah, ma'am. Okay. So have we done sorting before it? Let me see. Okay, insertion sort is done. So Actually, ma'am, in this question they have given that do not sort the array and directly just if it's. is the code not here? Should I explain you the code or like Yeah, ma'am, concept? just explain me the code because how we are not doing is the sorting. I'm not understanding because without sort, the code is. I think the code is doing sorting. I think. Okay, let me see. Let me see how it was done in the class. Uh, this is the concept which was used. So Yeah, here ma'am. what is done is The okay. swapping. This is basically sorting the array. Do you know, like, in which sorting algorithm does the array get sorted from backwards? Like if there is an array given and you are asked to sort the array, okay? So in which sorting algorithm will you find that the array is getting sorted from backwards? Tell me. Do you know bubble sort? Yeah, ma'am. Actually, I know all In the bubble. sorts, but I don't remember because many days I don't practice. I just See, don't. while learning sorting algorithms, you need to observe certain things, and the things which can be there is you might have if you might have worked upon bubble sort, you might have noticed that the array elements get sorted from backwards. For example, 6 will be the first element to get its correct position. That is, 6 will be there getting sorted first of all. Then fifth will be the next element that will be getting back to its correct position. Why? Because sorting algorithm is designed so. Do you know what is bubble sorting? How bubble sort works? Yeah. Shall I explain how bubble sort works? No, ma'am. Just explain me that in this code we are doing sorting or not. See, we are sorting. And as soon as I reach the kth, for example, in the question they had mentioned that you need to find the second largest element, right? So what Yeah, you ma'am. need to do is you can sort from you can sort using bubble sort, and as soon as you have done k, like first iteration will you be able to obtain the first largest element, in the second iteration you will be able to obtain the second largest element. So similarly, if they are asking kth largest in the kth iteration, if you might be familiar with the code of bubble sort, you will be able to obtain the kth largest element, and at that time you just need to return. See, Actually, I'll ma'am. explain you the Actually, code ma'am. what will be. Actually, ma'am. What I understand in the code that it's sorting and directly it's that this return statement that it will just sort first and this return statement array dot length minus means if it sort and it will directly minus with the
current value, like whatever be the value, take 1 2 3 4 5 6, it will be sort, and after sorting k minus 2 means that array dot length minus 2 will be directly the answer will be appear in that. Okay. See, this is a code similar to like bubble sort, except this part, right? Do you Yeah, ma'am. agree with this? So Yeah, what here we are doing is, bubble sorting. We used to do bubble sorting. So if you like sort it once, what will be happening? It will be compared with this. Are you greater than me? Yes, I'm greater than you. So swap this 2 and 3. 2 will come here and 3 will come here. Similarly, you will go on for comparing this part. After you compare this part, 3 is greater, so 3 should come here and 1 should come here, yeah, ma'am. right? So 1 will come here and 3 will come here. Now you will go on for comparing these both indexes. Now these both indexes are correct. This both indexes are right. So you will not stop. Okay. Similar way, you will go on comparing of these two. So if you compare these two, they are also at their correct position. Now you will go on for comparing these two. Now they are not at correct position, so 4 will go here and 6 will go here. Now what did you notice? In the first iteration, which element went to its correct position? Which element went to its correct position? Correct position means in the sorted array, the element where it should be placed, it is present at that place. Is it 6? Can you observe the largest element will go on its correct position in the first Yeah, ma'am. iteration, right? Did you observe? Now I am asking you kth largest element, and the value of k is 2. That means you need to make 2 iterations. You need to do 2 iterations. Why 2 iterations? Because in the second iteration, the second number will go back to its correct position. How? You will again iterate. Is 2 greater than 1? Yes. So swap these elements. 1 will come here and 2 will come here. Now you will compare both these elements, but they are in right order. Now you will come here, they are also in correct order, and here also if you compare, they will be swapped. So 4 will come here and 5 will come here. Now what did you observe? Which was the element which went to its correct position in the second iteration? Was it 5? The second largest element got back to its correct position in the second iterations. So why to iterate? Using the same concept of bubble sort, you just need to iterate k times, lesser than k times. Okay. Yeah, ma'am. Just you did 2 iterations because k was 2. So you like iterated 2 times and you were able to obtain the second largest element. And now you just return this element, whatever is present here. Just the concept of bubble sort, but instead of like moving at the entire element, you just need to move k times. As you can see here, you can move only k times, because k times will ensure that you have got the kth largest element from the last of the array. Yeah. So I think if you are facing problem with this question, then you are not very clear. You might have like learned this bubble sort, but you might not be very clear with the intuition or try run kind of thing. So just once go through bubble sort, you will understand this question and like logic for sure. Okay. Yeah, ma'am. Because I was in confusion that in the question is given that do not use the sorting technique. So that's why I have No, see, it's not given. You can't use any sorting techniques. In the ma'am, question they have given is in the first line they have given, they have okay. do not What sort they the have array. given? Note, do not Where sort. they do not sort the array, they means they don't simply apply arrays dot sort and find the corresponding element. They have given this. Okay, you can apply sorting algorithms like whichever sorting algorithm is like suitable here. You can use that. They have said you can't use arrays dot sort function. By this line, they mean this. Okay. Okay, arrays dot set means log and that merge sort. Not merge sort. Yes, internally it may be implemented by some other sorting algorithm that we are not discussing. You can't use that function. That's what is said in the question. Yeah, ma'am. Okay, And, Ankit, your problem. Okay, is your problem clarified now? yeah, ma'am. Okay, Ankit, let me see your code. मैम alternate column वाले क्वेश्चन में आप ये बता सकते हैं देखो ओके सारे टेस्ट केस पास नहीं हो रहे तो लेट मी सी फॉर I equals to 0 is lesser than rows मैम I एक्चुअली plus ये plus क्वेश्चन जैसे सर ने बताया था मैंने वैसा करा है तो हाँ उससे तो हो गया बट ये मैं उससे पहले कर रहा हाँ था हाँ
ये question I also discussed it yesterday, and the approach which you have applied na will हाँ, not work. I already said it yesterday, but like last में थोड़ा सा mind frustrated हो जाता है, तो मैं बोलती थी कि it will work, but it will not work. Why it will not work is this approach will work only when the number of rows and columns will be same. Tell me what will be happening. What will be the answer if this will come? Like ma'am, if rows and columns will be same, then that will be a square matrix, no? that will be a square matrix. In Uh-huh. that case, this code would work fine. But tell me, if the number of rows and columns are different, for example, I gave you this matrix 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Mhm. And then 8, 6, 4, 3, 2, 1, and then 9, 7, 5, 4, something like this. Yes. Please analyze your code for this case. All those who were present in booster session yesterday, I said that it will work, but you can see there are 4 rows and 6 columns, right? So according to your code, you are varying row, right? You are Yes, ma'am. varying rows. Means first of all, it will be going for 0th one, then it will be going for The second one, then fourth, then and so on, fourth, right? and then fifth. Yeah. Then what will be happening is the expected output is what? The expected output should be rows, na? So the Yeah. expected output is first, it should come 2, 8, 9, 9, 3. 3, and then it should come out to be what? What else? 4, 4, 5. 4, 4. Yes, 4, 4, 5, 5, right? Yeah. Then next it should come out to be 6 to 3, 7. 6 to 3, 7, right? Yeah. But what will be happening is, according to our logic, we went to 0th row. Okay, we went to 0th row, and then for 0th row, I'll be iterating through all the columns, right? So 0th row, that means what we have to print matrix of when the column value is 0. When the column value is 0, it will come out to be a matrix of 0, 0, right? Okay. So in that case, we will print 2. Now column will get updated, it becomes 1. Now according to the code you have written column row, that means first I need to write 1 and then 0. 0. Okay. 1, 0 is what? 8, Yes, right? ma'am. Now column value will become 2. Now column value becomes 2, and it will be printing you matrix of 2, 0. So it will basically come out to be 9. Then column value becomes 3, and matrix of 3, 0, that will basically be 3, right? Now after we have done all the columns, we will go for next row, that is 2. That is 2. Now row will become 2, and what all values will be printed? The values printed will be 4, 4, 5, 5, right? Yes, ma'am. This thing I'm not showing, you can do it by yourself. Mhm. Next, the row value will get updated and it becomes 4. But now tell me, in the condition we have put is row lesser than rows, right? Like the total number of rows. Will this validate? Okay, Will so 4th row no, exist? Will 4th row exist? no, ma'am. No. So no. So can we print columns corresponding to it? So tell me No. whether 6, 2, 3, 7 can be printed by this approach? No, ma'am, no. 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 So because of this purpose, this is J of I will not work. Okay. Okay, ma'am. Okay, Thank did you. you understand? Yes, ma'am. In I other got it. cases, it will work. If you find that number of columns is same and rows are different, and if number of rows, columns are same, in that case, it will work. But Ma'am, in what this was the scenario, question? Okay. the question was, which we discussed yesterday, that you only said, na, can we swap J and I? Can we? But it fails in this test case. Which one? When row and column is not equal, right? Yes, I said yesterday I was saying, but you like distracted me. So I stopped there itself. But what happened? You analyze this case. Will you be able to print in the right format as expected? Do it by yourself, okay? Okay. So when the number of rows will be different and columns, like columns will be less and rows will be greater, then it will work. When rows and columns will be equal, then also it will work. But when number of column is greater and number of rows is less, then it won't work. You can try it out with this example. So ma'am, मैंने total 100 questions solve कर लिया apparently. Good if you have solved 100 questions till now. Any more questions? मैम मैंने वो कर लिया मैम. Which question?
that minimum step वाला. अच्छा हो गया, good. Did you study recursion? Because I saw that you used recursion in हाँ that मैम, question. रिकर्जन तो सीख के कर दिया okay, good. मैम. पर Nice वो ले problem नहीं रहा, approaching. क्या? वो ऑप्टिमाइज करो बोल रहे हैं. हाँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन यूज किया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई. अब आप उसको डीपी से लाइक ऑप्टिमाइज करोगे, बट डोंट गो फॉर स्टार्टिंग डीपी ना. ओके, अभी मैंने रिकर्जन बोला तो रिकर्जन पढ़ लिया, दैट्स ओके, बट नॉट डोंट गो फॉर डीपी, क्योंकि उसको यू माइट हैव सबमिटेड इट ऑन लीड कोड और जीएफजी, राइट? नो मैम, दोनों पे नहीं ले रहे हो. Like, did it Time- got accepted on lead code playground or CodeChef compiler, any such compilers? लीड कोड कंपाइलर पे चल रहा है मैम. हाँ. पर वो इस पे जीएफजी पे और लीड कोड पे अगर सबमिट किया तो टाइम लिमिट बता रहा है. एक्सीडेड दिखा रहा है, क्योंकि जो बड़े टेस्ट केसेस है उनके लिए आपका कोड वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज यू हैव यूज्ड रिकर्जन एंड दैट आल्सो विद सो मेनी कंडीशंस. माय गॉड. नहीं मैम, अभी थोड़ा कम किया. अच्छा, कंडीशन कम कर दिया, ठीक है. मैम DP क्या ऑप्टिमाइज होता है? कैसे कर सकते हैं बताएंगे क्या? मतलब ऑप्टिमाइज में बोली ना, डीपी से होगा, दैट वी नहीं, कैन नॉट रिकर्जन डिस्कस. में ही. रिकर्जन में तो नहीं ऑप्टिमाइज हो पाएगा, लाइक अभी तो रिकर्जन में नहीं ऑप्टिमाइज हो पाएगा. जो लाइक different approaches exist apart from what you have applied, that I can explain later on, but not here. Many students are there, those who will not understand this recursion. We can't discuss it right now. Okay, TP is an algorithm, Abhishek, like to solve the question that you will study in elite batch most probably. हम Those who डीपी will be सीखने में enrolled. कितना टाइम लगेगा? अगर रिकर्जन अच्छे से आ गए तो डीपी में टाइम नहीं लगता, but like they are really very good topics. कब से स्टार्ट होगा मैम रिकर्जन? रिकर्जन तो आई थिंक मॉड्यूल 3 में है, but TP you will study in the next like elite batch. If you are able to join elite batch, in that case you will be अच्छा मैम, doing ये कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, सेकंड या ये फर्स्ट? मॉड्यूल, हाँ सेकंड चल रहा है. फर्स्ट तो खत्म हो गया ना, MCT 1 हुआ था ना. अच्छा. Any more doubts? So tomorrow is your test, right? मैट्रिक्स में वो- हमने क्या 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 कर लिया मैम? क्या? मैट्रिक्स में हमने क्या क्या कवर कर लिया? बेसिक से किया था, लाइक बेसिक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस वी कवर. एक्चुअली कल मेरे इधर बारिश हो रही थी तो नेटवर्क इशू की वजह से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए पूछे. Most probably, I don't think they will ask matrix for this week. Do whatever is there before matrix, but I won't say that they will not ask. They might ask. So you might be clear with basics of TP, like traversing TP, printing alternate. These all we have done, which are very basics and very easy to. मैम yesterday we discussed मैम routine. हाँ बोल भाई, बोल दे तू. भाई तुम बोल दो. हाँ मैम, 2D मैट्रिक्स इज एरे ऑफ एरे, ऐसा हमने कंसिडर किया था क्या? Array of array नहीं बोलेंगे, but let's see, 2D matrix is a two-dimensional array. Two-dimensional array means आप दो साइड like two coordinates के along vary कर सकते हैं, one along x and one along y axis. And similarly 3D DP भी like 3D array भी exist करता है जो 3-dimensional होता है. मैम बट मैंने थोड़ा सर्च किया तो वो बोल रहा है कि 2D एरे ऑफ एरे ही होता है. ठीक है. See, don't ask, like I'm not very good at theoretical concepts. Like logical questions, if you will ask, I will be able to. But ऐसी चीजें like which has to be learned or which has that I'm not very good at. भूल जाती हूँ मैं ऐसी चीजें. Print prime वाला समझा दीजिए एक बार 1 to n. Abhishek, which approach you are asking? Like in print prime also we did some approaches. अब्दुल से syntax पढ़ाया भाई, triangular तक है और roll कर. Shiva, you asked MCT test होगा मैम. When you are asking Shivaji, MCT test होगा? MCT test तो अभी नहीं होगा, जब मॉड्यूल 2 हो जाएगा फिर MCT test होगा, because MCT test is corresponding to each module. मैम ये टेस्ट बहुत आसान ले रहे हो और पिछले वाला ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं और पर.
अभी शुरू में टफ आता था तो आप ही लोग बोलते थे टफ होता था, तो आई कन्वेड टू द मैनेजमेंट दैट द क्वेश्चंस आर गेटिंग टफ, सो दे लोअर डाउन द लेवल. नाउ यू आर सेइंग द लेवल इज लो. ऐसे बोला था क्या हमने? Someone said, so I conveyed to the management that the questions are tough. मैम ये Students are असेस भी नहीं कर रहे, What? असेस नहीं कर रहे टेस्ट, बस टेस्ट दे रहे. See, these Sundays tests are not tracked, but MCT test will be tracked. Yes, exactly. Many students who have started right now will be facing the problems in the basics question also itself. So that's why they have lowered the question level. हेलो हेलो मैम, Yes. हाँ. कौन सा टेस्ट होगा कल? अरे जो हमेशा होता है संडे को. ओके मैम, एमसीटी टेस्ट कब होगा? MCT test will be conducted after module 2 is over. ओके So print prime वाला समझा दीजिए जो सर ने डिस्कशन में अपलोड करा है. हाँ. Any more doubts? Or should I take Abhishek's doubt? Okay. On which page it is? On which page it is? Abhishek, on which page this prime number is? Like the question you are asking? Please like note down your doubts, the page number, exact question. Now I will have to find on which page that question is. 10 plus ही होगा. Is it this question, prime checker 2? Then print prime or not prime? Print all primes. Which question is this? I can't see any such question. मैम इसी पेज में है ना, प्रिंट ऑल यूनिक प्राइम फैक्टर्स. अच्छा आई ये थिंक print. यही होगा क्वेश्चन. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसका क्वेश्चन, बट ये होगा ऐसा लग रहा है मुझे. Please from tomorrow onwards, if you have doubt, note down the question number and page on which you have doubt. So let me see which code was submitted. Which question, like here I can't see any such submission which you are asking. मैम इससे पिछले वाले पेज में था. इसके पिछले वाले पेज में. Okay. 10 में था शायद. शायद. Tell me. मैम ये इसमें देखना से कुछ- ऑल फैक्टर्स ऑफ द नंबर. ये था क्या? Print prime or not prime? मैम ये ऊपर वाला देखो, ये Prime checker. फैक्टर्स. फैक्टर्स वाला. Print all factors of a number, but you asked me prime. Shall I show you the discussion so that you can identify which code you're asking? मैम मैं 1 मिनट में बताता हूँ. 1 मिनट कौन सा पेज. Please be quick because only 4 minutes are remaining. Till then, anybody else has any doubt? You can write down in the chat. Sudipta, what doubt you have in matrix? You can unmute yourself and tell. Any question, any specific question or any specific concept? मैम वो प्रिंट ऑल्टरनेट रो और प्रिंट ऑल्टरनेट कॉलम वाइज किसी एक का ड्राई रन कर दीजिएगा तो अच्छा होगा. Okay, I already did it in yesterday's booster session, but कोई बात नहीं, फिर से कर देती हूँ. This question, print alternate column wise. एनी ऑफ देम. Okay, I'll do this one because this one is a little tricky more than that one. So in this question,
you need to print all the alternate columns, like starting from, if you see this matrix, what are the alternate columns? First of all, you need to print 49, 71, 89. You need to skip the second column, then print the third column, which is 16, 23, 61. So tell me in this question, which factor is varying? Like, which factor is there which you have to print in all the conditions, and which factor, like I'm asking between rows and columns, which factor is changing, which one you have to skip it. So columns, you have to skip columns. So in this question, columns will be getting like how much you have to increase column every time. If initially column is 0, then next column, which column you have to print? Do you have to print first column also? No, you have to print second column, right? So if there was a third column, then you need to skip that one. Then you need to print the next column, right? So did you understand the question? Is the question clear? Is the question clear? Question is not clear. Okay, let me explain the question. The question is, you need to print all the alternate columns. Alternate columns means you have to print the first column, skip the second, print the third, and so on. So in this matrix, you will print the first column, and column is this, right? This is row, this is column. Do you know this? Yes, ma'am. Now the question is understood. Okay. If the question is clear, which factor is changing? Like row, you have to print for a particular column, you have to print all the row values. Can you observe this? If I went to 0th column, then I'll be printing the value which is present at 0th row, first row, second row, and all. And if I go to the first one, I will have to skip it. I won't print this column. Then I will go to the next column. For this column also, you have to print all the row values, right? So what, like how will you use loops? How will you use loops? So externally, you can use for loop in which you can vary column, and every time can you observe that column is getting incremented by 2. We printed 0th one, skipped the first one, we printed second column. Similarly, we'll be skipping third one and we'll be printing fourth column if there would have been more columns, right? So by what amount the column values are changing? By 2, right? But row values, they'll be 0, 1, 2, like till where it is possible. All the row values you have to print out. Can you see? Yes. So the code which was written, should I explain you the code, or you want it to be more elaborative? Tell me. Code, okay. So in the code, you can see, first of all, we have taken input. Okay, for each row and column value, for each cell, you need to take input. After that, what next you will be doing is, you have to vary your column values, starting from 0, then 2, then 4. And for each column value, you have to traverse through all the row values and print them. So for like, if the column value was 0, then you went on for row equals to 0, 1, 2, until how many rows are there. And then you will be printing this matrix of row column, like the column at which you are present, print all the row values. Then vary your column, move to the next column, skipping the second, and then print all the row values along that. Are you able to get? If you want try run, I'll do it once more in booster session, okay? Line by line, okay. Okay, let's meet at 9:30.
Okay, so am I audible? Am I audible? Yes or no? Okay, so let us open problems. So has everyone revised matrices? Has everyone revised matrix 2D arrays? Basically, we discussed 3-4 problems yesterday. One was how to declare a matrix, an integer matrix, an integer 2D array, int square bracket, rows, columns. First will be rows, then will be columns. And it will be looking like a grid only, having some number of columns, some number of rows, some columns, some horizontal lines, some vertical lines. And each cell can be represented using two indices, one row index and one column index, or one row coordinate, second column coordinate, or one row dimension, second row column dimension. So two-dimensional arrays. So there are two dimensions. Then I discussed that how to take input of a array and also print the array, also print the matrix. So inputting as well as printing the matrix, both were row by row and from left to right, row by row, left to right. And output is also like generally it is also row by row, column by column. That is row by row, left to right. First print first row, then second row, then third row, and so on from left to right. And we are saying system.out.println, that is after every row, insert a new line. Then we discussed how to print alternate rows. Just skip every odd row. Directly row is equal to row plus 2. If you want to print column by column, so first interchange the loop, and since you have to print alternate columns, so make it column is equal to column plus 2. In order to print column by column, just interchange the loops. Input will still be the same, but output will interchange. And we will say that what change we have to do. We have to basically make column is equal to column plus 2 in order to print the alternate columns. First column, then skip second, then third print, then fourth skip, then fifth print, and so on. So these questions we discussed, and I guess, yeah, one more problem we discussed, which was upper triangle matrix, in which we said if the row is lesser than or equal to column, if the row index is lesser than or equal to column index, for row 0, C0 to C4, row 1, 1 to 4, row 2, 2 to 4, row 3, 3 to 4, row 4, 4 to 4, and row 5, 5 to 4. Actually, nothing. So for printing only the upper triangle, we are saying print the matrix if row is less than or equal to column, otherwise print 0. So these 3-4 questions we discussed yesterday. Has everyone revised all of these? Like, does everyone practice all of this and submitted all of these also? ठीक है, इतना यस यस बोल रहे हो, देख लेते हैं लीडर बोर्ड कितना है. हाँ, बहुत यस, वेरी गुड, बहुत ज्यादा यस है ना. मैंने लीडर बोर्ड चेक करना छोड़ दिया तो आपने सबमिट करना छोड़ दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोगों ने सबमिट किया. और यस कितने लिख रहे हैं? यस कितने लिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. चलो, कुछ लोगों ने 2 बार यस लिख रखा है, लेकिन मतलब जितने ने सबमिट किया उससे ज्यादा तो भाई यस लिख रखे हैं. ये कल वाला नहीं है? अच्छा सॉरी, ये तो प्रिंट लोअर ट्रायंगल, ये तो प्रिंट लोअर ट्रायंगल है. एक बार प्रिंट जो कल करा था. The last problem which we discussed yesterday was, I guess, print
upper triangle matrix. So let me check how many submitted upper triangle. चलो ठीक है, इसमें फिर भी ठीक लग रहा है काउंट, इसमें फिर भी मेरे को ठीक लग रहा है ऑलमोस्ट। कहाँ से पता लगता है टोटल सबमिशंस? टोटल सबमिशंस किधर पता लगते हैं? नंबर ऑफ सबमिशंस। ठीक है, नंबर ऑफ सबमिशंस 54। ठीक है, सही है। ओके, सो see one thing, like before starting the class I want to tell everyone, और हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में भी बता दूंगा, पहले हिंदी में बता देता हूँ, थोड़ा कान खोल के सुन लो। एक बार ही अगर आपके मूड में आ गया ना, एक बार आपके मन में आ गया लाइव क्लास में नहीं आना, वैसे तो गिक्सर आपको छोड़ेगा नहीं अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ रहे, मतलब वो अटेंडेंस ट्रैक करते रहते हैं आपकी। लेकिन एक बार आपका मूड बन गया कि यार लाइव क्लास में नहीं आते, मतलब क्लास चली छोड़ देते हैं, नहीं आते, बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग के थ्रू देख लेंगे, एक बार ये आदत सी बन गई, मतलब एक क्लास लाइव छोड़ दी, 2 क्लास लाइव छोड़ दी, 3 क्लास लाइव छोड़ दी, धीरे धीरे आप रिकॉर्डिंग में शिफ्ट कर गए और लाइव क्लास में बस ज्वाइन करके बैठने लग गए। फिर धीरे धीरे क्या होगा, रिकॉर्डिंग में भी जो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, अगर 2 घंटे की क्लास है तो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, और इंक्लूडिंग बूस्टर सेशन 2.5-3 घंटे की होगी रिकॉर्डिंग। अब मेरे को ये बता दो, क्या 2 घंटे की रिकॉर्डिंग क्या 2 घंटे में कवर हो जाती है? ऑल दो रिकॉर्डिंग के आपको रिकॉर्डिंग में ये भी ऑप्शन होता है कि भाई 1.5 पे करके देख लो, 2 पे करके देख लो, 2x पे, लेकिन क्या चल तब भी वो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग कभी भी 2 घंटे में कवर हो पाएगी? कभी भी नहीं हो पाती। भले ही 1.5 पे कर लो, भले ही 2x पे कर लो, कभी भी नहीं हो पाती। हाँ, कम से कम 3-4 घंटे चाहिए भैया। बीच में खाना खाना है भैया, बीच में फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, जो भी करना है, यूट्यूब चलाना है, बीच में कुछ ना कुछ आ ही जाता है भाई, ह्यूमन टेंडेंसी है, दिमाग ही ऐसा है कि 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, मतलब आप ये सोच रहे हो कि भाई लाइव तो पढ़ाया नहीं जा रहा, रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, थोड़ी देर ब्रेक ले लेता हूँ फिर देख लूंगा, ब्रेक ले लेती हूँ फिर देख लूंगी, तो वो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग कभी भी आप देख ही नहीं पाओगे। फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आपने धीरे धीरे लाइव क्लास से रिकॉर्डिंग पे आ गए, धीरे धीरे उसी रिकॉर्डिंग से आप क्या करोगे, चलो यार अब तो आज की रिकॉर्डिंग तो वैसे भी मैंने, मतलब मेरे पास पड़ी है, देखनी है ही, और मैं 1-2 क्लासेस पीछे चल रहा हूँ, मतलब मेरे को कल की रिकॉर्डिंग देखनी है और आज नई क्लास होनी है, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि यार 2 रिकॉर्डिंग हो गई एक साथ देखनी पड़ेगी, अब तो 3 रिकॉर्डिंग हो गई एक साथ देखनी पड़ेगी, किसी दिन आएगा संडे आएगा एक, तब देख लेंगे, एक छुट्टी आएगी तब देख लेंगे। धीरे धीरे रिकॉर्डिंग से क्वांटिटी बढ़ने लग गई। फिर हुआ क्या कि ऐसा एक दिन आया जिस दिन एक ही साथ आपके पास 7-7 बैकलॉग्स हैं, तो धीरे धीरे बैकलॉग बढ़ने लग गए, और जिस दिन ये बैकलॉग कम से कम 7-8 वीडियो का हो गया, मतलब एक हफ्ते का बैकलॉग हो गया, मतलब एक टॉपिक का बैकलॉग हो गया, फिर उस दिन भूल जाओ, फिर उस दिन कोडिंग आपकी समाप्त, उस दिन आपकी कोडिंग जर्नी समाप्त है, मतलब नहीं कर सकते उस दिन, कोडिंग जर्नी ऑलमोस्ट समाप्त है, वहां से वापस लाना आपको ट्रैक पर बहुत ही मुश्किल है। तो ये वाला, किसी भी पॉइंट पर आप पहुंच चुके हो, आप अगर किसी भी पॉइंट पर पहुंच चुके हो तो प्लीज अभी भी टाइम है कि इससे पहले, मतलब यहाँ तक लेवल ना है उससे ही बैक ट्रैक कर जाओ, मतलब उसी से लौट जाओ वापस। रिकॉर्डिंग्स वाले लेवल पर आ चुके हो तो ट्राई करो जितना जल्दी कवर हो सकता है कर लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग से, मतलब लाइव क्लास से रिकॉर्डिंग जाने में प्रोक्रास्टिनेशन चाहिए, भाई कर लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, यही चाहिए बस। रिकॉर्डिंग से बैकलॉग करने में भी यही चाहिए कि भाई एक ही रिकॉर्डिंग है, जहाँ एक है वह 2 है, जहाँ 2 है वह 3 रिकॉर्डिंग है, उसके लिए भी प्रोक्रास्टिनेशन ही, मतलब रोल प्ले करती है, भाई आज नहीं कल देखेंगे। फिर बैकलॉग से भाई 7-7 वीडियो कौन देखने बैठेगा, इससे बढ़िया बाद में ही पढ़ेंगे। 10-10 वीडियो, 12-12 वीडियो कौन देखेगा, 2-2 घंटे की, 24 घंटे की रिकॉर्डिंग कौन देखेगा? छोड़ो भाई, कोडिंग हमारे बस की बात नहीं है। तो इस पॉइंट पर आना चाहते हो क्या? मतलब पता भी नहीं चलेगा कब आ जाओगे, लाइव क्लास से रिकॉर्डिंग पर गए, रिकॉर्डिंग से बैकलॉग पर गए, रिकॉर्डिंग बैकलॉग जैसे ही हुआ कोडिंग समाप्त, पता भी नहीं चलेगा। कुछ और रीजन है, अलग बात है, मतलब कुछ लोगों का मे बी जो लाइव क्लास से रिकॉर्डिंग पर आए वो में भी कोई फीवर, मतलब कोई बीमार हो गया, कोई सर्जरी थी, इस तरह के रीजन से भी आ सकते हो आप, मतलब या फिर मन ही नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, लाइव क्लास में आने का मन ही नहीं कर रहा था, बोरिंग हो रही थी क्लासेस, कुछ भी रीजन हो सकता है। सिमिलरली रिकॉर्डिंग से बैकलॉग आने का भी कुछ भी रीजन हो सकता है कि भाई रिकॉर्डिंग इतनी सारी इकट्ठी हो गई, रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाया, लाइव क्लास भी नहीं देख पाया, वो भी मतलब सेम ही रीजन हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो भी रीजन हुआ, क्या यहाँ से इस पॉइंट से भाई पैकेज उठाएंगे 5 का, 10 का, 15 का, फैंग में जाएंगे, वहां से हमारे बस की बात नहीं है। इस वाले लेवल पर आना चाहोगे?
ठीक है, नहीं आना चाहते ना, नहीं आना चाहते तो यार प्लीज जिस भी पॉइंट पर आप पहुंच चुके हो कि भाई रिकॉर्डिंग्स कुछ पेंडिंग है, मतलब 1-2 रिकॉर्डिंग पेंडिंग है, 1-2 क्लासेस पहले चल रहे हो, या कुछ बैकलॉग हो रखा है, कोई टॉपिक बीच में छूट रखा है, कोई प्रीफिक्स सम छूट रखा है, कुछ भी छूट रखा है, कोई भी टॉपिक हो, टाइम एंड स्पेस छोड़ रखा है, एरे की मेमोरी मैपिंग छोड़ रखी है, प्लीज कवर कर लेना, वरना दिक्कतें हो जाएंगी, ट्रस्ट में दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि अब सारे टॉपिक्स लिंक्ड है एक तरह से। एक टॉपिक छोड़ दिया तो दूसरा टॉपिक इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, आ जाएगा ऑल दो, मतलब अगर आपने प्रीफिक्स सम वगैरह नहीं कर रखा तो मैट्रिक्स समझ आ जाएगा, लेकिन बेटर विल बी के फ्लो में चलो भाई, इजी टू हार्ड जाओ, इंस्टेड ऑफ के भाई प्रीफिक्स सम और लीनियर सर्च वो सब नहीं कर रखा और डायरेक्टली मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स कर रहे हो, ऑल द मैट्रिक्स में वो रिक्वायर्ड नहीं है बट स्टिल। तो बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो? ठीक है। So we are starting with the class. We are starting with the class. First problem for today will be printing lower triangular matrix. Yesterday's last problem was printing upper triangle matrix. First problem for today's class will be printing lower triangle matrix. What does it mean? They are saying if the matrix is this, so print the lower triangle and skip the upper triangle, like just opposite to the previous problem. Now what we have to do, we have to take all of these elements, including the diagonal, including 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, including these, we will have to take these elements also as lower triangle. So whatever elements are in the lower triangle, we will have to print them as it is. Like if the lower triangle has 0, 0, print 0, 0, like 0. Print 11, print 22, print 33, print 44, print 10, 20, 30, 40, 31, 32, and these values as it is, which are in the lower triangle, lower right, lower left triangle. Print them as it is. But elements which are not in the lower right triangle, sorry, lower left triangle, which are not in this triangle, that is, which are in the upper right triangle, replace them with 0. Replace them with 0. So if these are the elements which I am making as yellow, so for the yellow elements, replace these elements with a 0, with value 0, and print 0 instead of them. That is, instead of 1, 2, 3, 12, 13, 14, 23, 24, and 34, instead of these elements, print 0. So what should we do to print the lower left triangle and upper right triangle as 0? What should we do? Like what should be the condition, if condition? मेरा नेट वीक था क्या, बीच में अटक गया क्या? नहीं, ठीक है। What should we do? Like what is the condition? What is the condition for green elements in the green triangle? Condition with respect to row and column, like column is less than row, more than row, equals to row. What is the condition for these types of values? See, for row 0, I am saying column 0 should be printed. For row 1, column 0, column 1. For row 2, column 0, column 1, column 2. For row 3, column 0, 1, 2, 3. Row 4, 0, 1, 2, 3, 4. Row 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, but 5 is not there, so 0, 1, 2, 3, 4 again. So can I say I will have to print the elements in the lower right triangle if the row is more than or equals to column, yes or no? Lower right triangle is nothing but the row index is more than or equals to column index. That is, column is less than or equal to row. Column या तो छोटा होगा रो से या बड़ा या बराबर होगा. Column 0, 0, 0 or 1, less than or equals to row, less than equals to row, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, but 5 is not there. So row will be lesser than or equal to column. So print the element because it is in the lower right triangle, lower left triangle. Otherwise print 0. Otherwise print 0. Else print 0. Is it clear? Like pretty same question as we did yesterday. Just if condition instead of row is less than equals to, sorry. Yeah. Wait. I wrote condition opposite.
condition should be row should be greater than equals to column. Sorry, greater than equals to column. Yes or no? It should be greater. Lesser than is for the upper right, but for lower right, lower left, it will be greater than equals to. Row will be more. If row is 0, column can be lesser than or equals to column row. That is 0 only. For row 1, lesser than or equals to 1, 0 or 1. For row 2, lesser than equals to 2, which is 0, 1, 2. For 3, 0, 1, 2, 3, lesser than or equals to row. Row can be more than or equals to column, or column can be lesser than or equals to row. Is the condition clear? Just opposite to the previous question. इसमें रो लेस देन इक्वल टू कॉलम था, यहाँ पर रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम है, बस अपोजिट करना है. So I will just copy paste the previous code which we have done already, or let's write the code from scratch so that you guys also revise how to take input output of a matrix. So if I am saying let's create a scanner object, how many dimensions will be there for a matrix? How many dimensions? How many sizes will be there? Will there be a 1D size only? 1 dimension only? No, there will be 2 dimensions. That is the row dimension, the number of rows, the number of horizontal levels, and the number of vertical levels, that is number of columns. And now creating the matrix of integers will be int square bracket mat, you can name it as ARR only, it is your wish, is equal to new int first dimension will be the rows, second dimension will be the columns always. Now what we are saying, input will be always row by row. So row is equal to 0, row is less than total number of rows, that is rows, and row plus plus. Now column will be column 0, column is less than columns, column plus plus. So this is like for inputting what I am saying, array of row comma column I comma j, horizontal comma vertical is equal to scn.nextInt. This is how we take input of a matrix. And for outputting also, we are printing row by row only. That is first 0th row, all the columns, then first row, all the columns, second row, all the columns, and so on. And each row should be printed in a separate line. So what should we do? Each row should be printed in a separate line. What should we do for that? हर रो को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? println आफ्टर द इनर लूप के बाहर, बाहर वाले लूप के अंदर, बाहर वाले के अंदर, अंदर वाले के बाहर. So what we are saying, if column is lesser than or equal to rows, or we can say column is lesser than equal to row, or row is greater than equal to column, whatever. If this is true, so system.out.println the value itself, matrix of row comma column, and not println but print with a space. Otherwise print 0 according to the problem, because we have to print the lower left triangle. So we will print for the opposite case, that is column is lesser than or equals to row. Otherwise we will print 0 for upper right. This is for upper right, and this is for lower left, including diagonal. Okay, let's try to run it. So there is some syntactical error. This is not ARR, this is MAT. So it is getting submitted, like it is getting sample test case correct. Let's submit also. All the test cases are passing, like pretty simple, same logic almost. Just instead of row less than equal to column, now the condition is column less than equal to row. Instead of upper right triangle, now we are printing lower left triangle. I'm also sharing the code in the discussion. Okay, so I have shared the code in the discussion also, and I have posted in the open code also. फंक्शन यूज होते हैं, अभी करवाऊंगा फंक्शंस यूज. उसमें बस एक चीज छोटी सी और है कि रो को मैट्रिक्स डॉट लेंथ लें, कॉलम्स को क्या लें फिर. मतलब जैसे एरे में, इन एरेस size is equivalent to array dot length, yes or no? ARR dot length. But in 2D arrays, what will be MAT dot length, and how to take columns? That we have to discuss.
बिना फंक्शन कोड बड़ा बड़ा लगता है। अब फंक्शंस की आदत पड़ गई। जब मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था पहली पहली बार, जब मैं सारे क्वेश्चन फंक्शनों में करवाता था, भैया ये क्यों कर रहे हो सर, ये क्यों कर रहे हो, फंक्शंस में क्यों तोड़ रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है। और अब फंक्शंस में नहीं तोड़ रहा है तो फिर कोड बड़ा बड़ा लग रहा है। कुछ दिन तो पढ़ा दो लीड कोड में, पढ़ा तो रहे हैं आपको मोहम्मद अली अंसारी जी। ये किस पर है बताओ मोहम्मद अली अंसारी जी, किस पर है ये क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमने किस पे करे हैं? हैकर रैंक पे करे हैं ना? सबको ये शीट मिल गई थी? देखो मैंने मतलब मैसेज भेजा नहीं था उस शीट के साथ, मैंने एलीट बैच में शायद से भेजा था मैसेज। लेकिन मतलब ये मेरी 2 साल की कॉम्पिटिटिव की मेहनत प्लस 1 साल की जो मैं पढ़ा रहा हूँ एड टेक में उसकी मेहनत है, तो टोटल 3 साल की मेहनत है शीट में। और मैंने इस शीट को बनाने में भी कम से कम 3-4 हफ्ते लगा दिए थे। और जिसको लगे कि भाई स्ट्राइवर वगैरह और लवर वगैरह जिनको आइडिया हो इन सब के बारे में, उन जैसे शीट है तो उन जैसी नहीं है भाई, वो मतलब सिर्फ जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन है वो डाल देते हैं अपनी शीट में। लेकिन ये पूरी कैटेगरी वाइज है, जिस ऑर्डर में आप पढ़ सकते हो, मतलब जिस ऑर्डर में आप डीएसए कर सकते हो मेरे साथ एलीट बैच में या फिर खुद से, उसी ऑर्डर में मैंने ये शीट प्रिपेयर कर रखी है। सो यू कैन फॉलो इन द सेम ऑर्डर इफ यू वांट। You can follow getting started, that is basics, digit traversal, basic Java problems, basic mathematics problems, pattern printing, then time and space complexity. Then go to array and string and practice problems of array and string. Then go to number theory, Euclid, prime numbers, modular arithmetic. Then go to recursion, then sorting, searching, linked list, stack and queue, and so on. So like it is, you can say complete, almost it will contain 500-600 problems of DSA. I am not saying of getting started. Getting started is separate. Like till now, you can say we have studied getting started and we have studied array and string. We are currently studying array and strings, and we have somewhat of like some part of number theory we have also studied. But majorly what we have studied, getting started, array and string, and some sorting algorithms, some basic sorting algorithms we have also done. But this is like complete. This is what we are going to do in elite batch. Okay, and it also includes competitive if anyone wants to do competitive later on. So it will also contain competitive topics which will be required for like even better companies than Google, even more packaged companies than Google. अभी ट्राई तो यही कर रहा हूँ, एलीट बैच जो करंटली ले रहा हूँ उसमें ऑलमोस्ट पूरा ही करवा रहा हूँ मैं। मतलब ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए जाते हैं, लेकिन ट्राई तो यही रहता है कि पूरे सारे टॉपिक्स करवा दूँ। जैसे सॉर्टिंग मैंने पूरा करवाया है एलीट बैच में। आई डिड बाइनरी सर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट, 80-90% कंप्लीट. Linkage also 80% complete I did in the elite batch, and currently we are in the elite batch, we are doing trees, binary tree. So I am also trying to like complete it almost 70-80%. अभी तक तो यही रेशियो चल रहा है जो शीट में से मैं करवाना ट्राई कर रहा हूँ। 100% तो कभी भी नहीं हो पाएगा, 100% तो आप ही की प्रैक्टिस है। मतलब अगर मैंने आपको कुछ भी टॉपिक दे दिया, इफ आई गिव यू मे बी बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, so in these problems, like some of the problems you can do it on your own. It does not require a class for you to teach. You can practice on your own. If you will open basic mathematics problems, it does not require any extra knowledge. You can do it. You can start solving these problems. It is basic maths as the name suggests. Similarly, digits, printing the reverse of a number, printing basically sum of the digits, product of the digits,
self-dividing numbers, Armstrong number. Like some problems we have also done, but some problems we can practice also. Okay. शीट में सिस्टम डिजाइन की वीडियो हिडन है, शीट में मैंने सिस्टम डिजाइन की वीडियो शेयर करी थी क्या? सिस्टम डिजाइन तो अलग है, मतलब उसका अलग फोल्डर है, मैंने लिखा भी था जैसे DS एक्सेप्ट सिस्टम डिजाइन, शायद जितना मुझे याद आ रहा है। देखो 4 वीडियोस हिडन होंगी, 4 प्लेलिस्ट हिडन होंगी, वो 4 प्लेलिस्ट मैं बता देता हूँ। एक प्लेलिस्ट होगी आपकी, मतलब प्लेलिस्ट तो एक्सेसिबल होगी लेकिन उसमें वीडियो सारी हिडन होंगी। मैं 4 प्लेलिस्ट के नाम बता देता हूँ। एक प्लेलिस्ट जो हिडन जाने वाली है वो है आपकी हैश मैप का स्क्रैच टू एडवांस, ये हिडन प्लेलिस्ट है। पहली प्लेलिस्ट जो हिडन रहने वाली है वो ये है, मतलब इसकी वीडियोस आपको नहीं दिख रही होंगी, मैं दिखा देता हूँ। मैं दिखाऊंगा तो दिख जाएंगी लेकिन आपको नहीं दिखेंगी। करीब इसमें 12 वीडियोस है, ये आपको नहीं दिखेंगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एडवांस की, मतलब इसमें लेवल 2 मान सकते हो आप, एडवांस्ड नाम ही सजेस्ट कर रहा है। इसमें ऑलमोस्ट 20-25 लेक्चर हैं, 24 लेक्चर हैं, तो ये आपको हिडन दिखेगी, ये भी नहीं आपको दिखेगी, मतलब इसकी वीडियोस आपको नहीं दिख रही होंगी। एंड 2 प्लेलिस्ट और है, या एक प्लेलिस्ट ऐसे और है जो कि है ग्राफ्स की, ये भी आपको नहीं दिखेगी अभी हाल फिलहाल। ये 3 प्लेलिस्ट आपको नहीं दिखेंगी, बाकी सारी प्लेलिस्ट आपको दिखेंगी, बाकी सब आप फॉलो कर सकते हो इन 3 के अलावा। क्योंकि यार ये 3 मतलब मैं सेपरेट फ्रीलांसिंग बैच बोल सकते हो उसमें ले रहा हूँ, तो मतलब ये मेरा खुद का बैच है और इसकी मैं वीडियोस हर किसी को एक्सेसिबल नहीं करवा सकता। जो मैं करवा सकता था वो मैंने फ्रीली करवा दी, जो मैंने पहले वेब कोडिंग में बैचेस ले रखे हैं वो मैंने आपके साथ पूरा शेयर कर दिया। मतलब ये कोर्स जो मैंने शेयर किया ये 20,000 रुपये का था वेब कोडिंग में, 20,000, 25,000, 30,000 का, तो मैंने फ्री में शेयर कर दिया अभी आपको। तो आप पोस्टपेड हो ना यार, यू आर पोस्टपेड, आपकी गारंटी गीक्सर ले रहा है। देखो मेजरली जो आपके 80% बैच के स्टूडेंट्स हैं, मेजरली लोगों को पहले से मतलब प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, और आती भी थी तो बेसिक बेसिक बहुत हल्का फुल्का आइडिया था। अब ऐसे लोगों को 5 से 10 या 15 लाख की कंपनीज में प्लेस करवाना, ये हेडेक अगर गीक्सर ले रहे हैं तो फिर भाई उस हेडेक का वो मतलब आप बोल सकते हो कुछ ना कुछ ओनरशिप ले रहा है अगर वो किसी चीज की, तो फिर समझ गए ना, मतलब रिवॉर्ड भी ज्यादा ही लेगा ऑब्वियसली। Okay, so now we are discussing the next problem. Next problem is print row wise with a condition. Print row wise with a condition. ये क्या चला गया, ये कोड कहाँ से चला गया, ठीक है। So next problem is print row wise with a condition. I have shared the link. What is the problem? You have to print even rows from left to right, but odd rows from right to left. What does it mean? If I am giving you the same matrix, this matrix is given to you. Let me just first copy this matrix. बहुत ही बढ़िया, क्या कॉपी हो क्या आ गया। चलो दोबारा कॉपी कर लेते हैं यार, यहाँ पे डेटा को चेंज करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, डेटा भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, एज्यूम कर लो स्ट्रिंग का है। So if this is the matrix and I am saying you to print it in wave traversal, it is a wave traversal of a matrix, row by row wave traversal. The question can be also named as row by row wave traversal. What does it mean? You have to travel it in the form of a wave, लहर की तरह. What does it mean? First row from left to right, next row from right to left, next row from left to right, next row from right to left, next row from left to right, next row from right to left, and so on. So alternate rows, left to right, right to left, left to right, right to left. You have to print row by row. First, you have to print all these elements from 0th column
to the last column, from 0th column to the last column, then from the last column to the 0th column, then from the 0th column to the last column. Similarly, this alternate thing will go on. This alternate thing of printing left to right, right to left, left to right, right to left will go on till the last. This is nothing but row by row wave traversal. It is kind of forming a wave. Is it clear? Why is it forming a wave? Yes or no? भाई अब पिक्चर की फीस कम हो गई है. अब मैंने कुछ डिस्कशन क्या कर लिया, पता नहीं यार. जो क्वेश्चन करवाता हूँ उस पर ध्यान दो. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज गिवन a matrix, you have to print it row by row, but in such a manner, you have to print it row wise, but in such a manner that even rows, 0th row, 2nd row, 4th row should be printed from left to right, but odd rows, 1st row, 3rd row, 5th row, and so on, should be printed from right to left. That is 0th row, 2nd row, 4th row, from left to right, C0, C1, C2, C3, C4, left to right. But odd rows, R1, R3, R5, from right to left. That is first C4, then C3, then C2, then C1, then C0. Like this, from right to left. So alternate rows, left to right to left, left to right to left, or a wave traversal, kind of a wave. So how will you print in the wave form? Saurav answer in personal chat, then I will say it is correct or not. लेकिन तब भी करेक्ट ही होगा, तभी बोल रहा हूँ पर्सनल पे. How should we do in wave traversal? How printing should be done in wave traversal? This is the problem. What should we do? अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इजी है, बहुत इजी है. क्या करें सच दैट इवन रोज के लिए लेफ्ट टू राइट हो, दिस इज द इवन रो, और लेट मी टेक डिफरेंट कलर. दिस इज द इवन रो, even index row. So for even rows you are printing left to right, but for odd rows, this is the odd row, you are printing right to left. Very good, Sudipta. Very good. No, sorry, Shivanu, not Shivani, not like correct, I guess. Abdesh, your code is also looking correct almost. I think. ठीक है, और तो किसी ने आंसर दिया नहीं है अभी पर्सनल चैट पर. ठीक है, दिया होगा तो देखा नहीं मैंने. So can we do it like if else condition? If row is even, loop from left to right, else row is odd, print from right to left. Yes or no? Simple if else condition. Outer loop will be as it is, row loop will be as it is, but the column loop will be based on row index. If the row is even, run the column loop from left to right. Else, if the row is odd, print the column loop from right to left. Simple if condition, if else condition. What we are saying, let's first copy the previous code, which is, I guess, on page number 17 or 18 maybe.
So the previous problem was printing lower triangle matrix. Let's copy the code. So first thing is, obviously we will not do this if else condition here. We are saying print row comma column, print row comma column, every row, every column, row by row, column by column. But column by column depends on the row index. If row is even, print left to right. This is left to right from 0 till last column. Starting from 0, going to last column, left to right. But if we are starting from last column and going till 0, it will be right to left. So depending on the row index, if row index is 0, it is even row. Row modulus 2 is 0. So print like this. Print like this. If the row index is 0, it is even row modulus 2. So print from left to right. Otherwise, if it is odd row, print from right to left. Simple if condition. If it is odd, so start from columns -1, go till 0, go till greater than equals to 0, and do column minus minus. Yes or no? अगर रो इवन है तो लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर दो, अगर रो ऑड है तो राइट टू लेफ्ट प्रिंट कर दो, बस लूप उल्टा कर दो, हो जाएगा काम. Yes, so let's run it. So sample test case is passing. 312, 312, 203, 203, 454, 454. So left to right to left, left to right to left. So let's submit also. All the test cases are passing. This is the code. I am bringing the code in the chat also, not in the chat, but in the open board also. Easy questions है, मुश्किल तो नहीं है. Are these hard problems or are these easy? मतलब इसमें कुछ मुश्किल लग रहा है अब तक, ऑनेस्टली लग रहा है तो बता दो, अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो. Okay, so I have posted the code in the discussion also. सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे, क्या हो गया अरमान? पहले तो नेक्स्ट नेक्स्ट बोला करते थे, आप कर रहे हो तो समझ आ रहे हैं. प्रीफिक्स एरे और 2 पॉइंटर के क्वेश्चनों में तो नेक्स्ट नेक्स्ट बोला करते थे. अनम्यूट कर सकते हो? क्या समझ नहीं आया क्वेश्चन में, क्या समझ नहीं आया? आवाज नहीं आ रही मेरे को आपके, अगर कुछ बोल रहे हो तो. Should I do a dry run or is it clear? If the row is even, print left to right. If the row is odd, print right to left. Even row, left to right, from 0th column to the last column. Odd row, first row, third row, fifth row, then right to left, right to left. That is starting from the last column, going till 0, column minus minus. ठीक है, एक बार ड्राई रन कर दीजिए. So let's take a smaller matrix. Let's take a matrix of 3 rows, 4 columns, or let's take 4 rows, 3 columns. Or let's take 5 rows, 3 columns.
Let's take some values. This is 0, 0. This is 0, 1. This is 0, 2. This is 1, 0, 1, 1, 1, 2, like 10, 11, 12. This is 20, 21, 22. This is 30, 31, 32. And this is 40, 41, 42. So if I draw the row indices and column indices also, this is row 0, this is row 1, this is row 2, row 3, row 4. There are 5 rows. This is column 0, column 1, column 2. So there are 5 rows and 3 columns. 5 rows and 3 columns. So what we are doing? We are saying the row loop is starting from 0th row till the last row, till rows minus 1, till 4th row. Total rows are 5, so 5 minus 1, till 4th row. So rows loop will be from top to bottom only. It will be from top to bottom. That is row by row, starting from the first row till the last row. Now check whether the row is odd or even. First row is 0. It is even row. So even row. So this if condition is true, that is we will run the loop of column from left to right. We will run the columns loop from left to right. For this, we will run it from left to right. That is starting from 0, going till columns minus 1. Print 0, 0, print 0, 1, print 0, 2. So output will be 0, 0, 0, 1, 0, 2. Then insert a new line. Else condition will not execute because if it has executed. Insert a new line, go to the next line, and now execute for the next row, that is row plus plus. Check whether row is even or not. Row modulus 2, is it 0? 1 modulus 2, is it 0? No, row is odd. So go to the else condition and now run a loop from right to left because it is an odd row. So the inner loop, the columns loop will run from right to left. And since it is running from right to left, we are starting from columns minus 1. We are going to 0 and we are doing column minus minus. Starting from total columns minus 1, 3 minus 1, going till 0 and column minus minus. So right to left. Printing 1, 2, then 1, 1, then 1, 0, and inserting a new line after the loop. And this process will go on. Now row 2 will come, row plus plus because, and we will say that since the row is even, so print the row from left to right. That is run a loop from 0 till columns minus 1 and print the elements which is 2, 0, 2, 1, 2, 2 and insert a new line similarly and keep on doing this. Is it clear? Quickly submit this, then we will move to the next problem. And those who have done, the next problem will be, I guess, printing column by column in wave order. So those who have done, I am sharing the next problem link also. Try this. सर ये क्वेश्चन पढ़कर अपने शब्दों में बताना एक बार बताता हूँ यार अपने शब्दों में बताता हूँ मैं वहां पे यही कर दूं मतलब क्वेश्चन के साथ अपनी एक वॉइस मैसेज डाल दूं ये जनाब प्रिंट करिए कॉलम बाय कॉलम इवन इवन कॉलम है तो ऊपर से नीचे जाइए ऑड कॉलम है तो नीचे से ऊपर आइए यही कर दोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा वरना नहीं हो पाएगा
अच्छा, इसको फीचर ले रहे हो क्या? मतलब जो आपके दिमाग की कमजोरी है वो फीचर हो गया। अगर आप क्वेश्चन रीड नहीं कर पा रहे तो ये फायदा नहीं है। मतलब क्लासेस जितनी मर्जी लगा लो, क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए यार। मजाक मजाक में ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, लेकिन प्लीज यार प्रॉब्लम रीड करना स्टार्ट कर दो खुद से। कोई टेस्ट में थोड़ी ना साथ में बैठेगा अनलेस अनटिल आपने किसी को 100 रुपए दे रखे हैं तो बैठने के। वैसे 100 में तो कोई नहीं मानता आजकल, कम से कम 500 तो लगेंगे, बट स्टिल। कार्तिक बोल रहे हैं ऐसा भी होता है क्या? अरे तुम्हें क्या पता कैसा कैसा होता है, हमसे पूछो हमारे कॉलेज में क्या क्या हो रहा है। जिसने आज तक लिटरली एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा था वो कोडिंग राउंड में सेलेक्ट हो गया। ये कैसे हुआ? लक तो नहीं बोल सकते, पहुंच बोल सकते हैं, पहुंच है उसकी बहुत बहुत ऊपर तक पहुंच है, सेटिंग है। बाद में प्रॉब्लम होगी वो अलग बात है, उसको तो कंपनी में घुसने से मतलब है ना। वो तो ऑब्वियसली लोग अब 300 लोग हर कंपनी में विप्रो में फायर क्यों हुए हैं? ऐसी लोगों की वजह से हो रहे हैं जो बिना बात के किसी और के थ्रू घुस जाते हैं कंपनी में, वैसे ही लोग फायर होते हैं फिर। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे ऐसे होते होंगे, लेकिन हाँ। मून लाइटिंग तो यार मैं भी कर रहा था जब मैं सेल्स फोर्स में था, मतलब अभी भी हुई, ऑफर लेटर है। लेकिन जब मैं काम कर रहा था सेल्स फोर्स में इंटर्नशिप, तो साथ के साथ मैं बैच भी ले रहा था गिगशर में, तो मून लाइटिंग तो इधर भी चल रही थी। मून लाइटिंग होता है कि आप ऑफिस के वर्किंग आवर्स के बाद या सैटरडे संडे को आप कोई और खुद का काम करते हो या किसी और कंपनी के लिए काम करते हो, वो होता है मून लाइटिंग। या तो कोई खुद का काम कर रहे हो या फिर किसी और कंपनी का काम कर रहे हो, लेकिन वर्किंग आवर्स के बाद। मतलब वर्किंग आवर्स में तो आप उसी कंपनी का काम कर रहे हो, मतलब जनरली 9 to 5, 10 to 6 जो भी वर्किंग आवर है, उस टाइम तो आप कंपनी का काम करो जिस भी कंपनी में आप प्लेस हो। उसके बाद आप खुद जो भी करना चाहो करने के लिए अलाउड हो, मतलब होने चाहिए, लीगली अलाउड होने चाहिए आप। आगे चलें, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रिंटिंग कॉलम बाय कॉलम इन वेव ट्रेवर्सल। So if now you have to print column by column but in zigzag order, that is if this is the matrix, and if I am asking you how will you print it column by column zigzag traversal or wave traversal, that is first column top to bottom, then next column bottom to top, next column again top to bottom, even rows top to even columns top to bottom, odd columns bottom to top. How will you print column by column in wave traversal, in wave order? क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन का लिंक शेयर कर देते हैं। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम which is printing column by column in wave traversal form. I guess this is the question. Starting from 0th column such that even column is traversed from top to bottom and odd column is traversed from bottom to top. So print column by column in wave order. In wave order. How will you do it? First thing, instead of printing row by row, if we need to print column by column, should we first interchange the loop? Yes or no?
That is outer loop will become columns loop, inner loop will become rows loop. That is first fix column 0, run a loop on rows. Fixed column 1, run a loop on rows. Fixed column 2, run a loop on rows. So fix a column and run loop on rows. But the direction of running the loop on row will be depending on the column index. If the column is even, so print row from top to bottom. Otherwise, if the column is odd, so print the basically rows or run the row loop from bottom to top. So it will be like exactly almost same. First change will be, we will interchange the loop. Should we interchange the input loop also? Like, should we in the input also say outer loop will be column, inner loop will be row? No, input will always be row by row. 99% scenarios, input will be row by row. Only what we have to change. Now this will not be there. We are saying the output will be, first thing will be, it will be column by column. So column is equal to 0. First outer loop will be column. Fix a column. Start from the leftmost column, go to the rightmost column. 0, then 1, then 2, then 3, then 4. So start the column from 0th column to the last column. Now, depending on the column, inner loop will be on the row, either from top to down, from 0 to row -1, or from row -1 to 0. So if column is even column, if it is an even column, so should we run a loop from top to bottom or bottom to top according to the problem? अगर रो एक इवन रो है, सॉरी कॉलम एक इवन कॉलम है, तो टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है. It is top to bottom. So we are saying the row loop will be starting from 0, going till last row, and row plus plus, top to bottom, row plus plus, like going downwards. And we will say system dot out dot print. Should we say matrix of column comma row, or should we still say row comma column? Will it be column comma row, or will it be still row comma column only? It will be always row comma column. First coordinate will be row, second coordinate will be column. If you interchange, you like it might give you index out of bound exception, because we are doing like row by row, column by column traversal. Column will still be the second index only. Otherwise, if a column is a odd column, then we will run the loop from bottom to top. So rows -1 till 0, and row minus, that is from downwards to upwards. And after printing the column, we will insert a new line. Similar to the previous code. So I hope this runs. Let's see. Sample test case is passing. Let's submit also. All the test cases are passing. I am pasting the code in the discussion. Those who want to see the code from the discussion, they can check it out. And I am also pasting it in the open board. Input output is same. Sorry, input is same, output is different. In output, we are saying run the loop interchange manner. That is outer loop column, inner loop rows, because we have to print column by column. But in column by column, we have to print in zigzag order or wave order. So column by column is printed. This is the first thing. Then even column. So top to bottom. Top to bottom. And odd column, according to the problem, should be printed bottom to top. How much is the time complexity? There are 3 loops. Will it be n cube? Yes or no? 3 loops n cube. Yes. Rows into columns into rows. Columns into rows into rows. N into n into n. N cube. ठीक है. तो आज तो नशा नहीं कर रखे. So it is n, either this into n or this into n. So either this will run or this will run, either top to bottom or bottom to top. So even if both the runs, even if it is both, still it will be n plus n into n. So 2n into n, still it will be 2n square. But since it is if else, either this will run or this will run. So if this is running, n into n, or this is running, so n into n. So it is n square only. It is not
for, inside for, inside for. It is for, inside for, then else condition another for. So it is not n cube, it is still n square. It is still n square. So time complexity of the previous code also and this code also, like till all the problems we have discussed of matrices till now, all the problems are n square only. And how much is the extra space? How much extra space we are taking? Now there are two things. If we talk about input space, how much input space is there? That is in the input, how much big array we are creating, how much big data structure we are creating. Input space is n square as discussed. It is number of blocks into one block size, which is 4 bytes. So number of blocks are rows into columns, n into n. Input space is n square, order of n square. But when we talk about extra space, are we taking any space from our side, like to run the algorithm, to print in wave order? Are we taking any extra data structure? कोई extra चीज बना रहे हैं? Or only we are creating two integer variables, 2 pointers, row pointer, column pointer, only 2 coordinates. Only 2 coordinates, 8 bytes. So it is constant. Extra space is constant. We are not taking any extra variable, extra array, extra string. We are only taking 2 pointers, which is 4 bytes plus 4 bytes or 8 bytes plus 8 bytes, whatever. But like it will be integer, so it will be 4 bytes plus 4 bytes, which is, you can say, constant operation, like constant space. You are not taking any extra memory to perform the approach, to perform the algorithm. Till now, almost every problem is same. Like, I guess almost all the problems are same. That is, time complexity will be, till now, all the problems will have n square. All the problems will have input space n square. Output space is nothing, like we are not printing, we are not returning anything. Everything we are printing directly. So there is no output space also. And extra space is also constant. There is no extra space. शॉर्ट ड्राई रन प्लीज. यार इसमें भी ड्राई रन करूँ क्या अब? जो रो बाय रो में हो रहा था वो कॉलम बाय कॉलम में हो रहा है. हर्ष, इतना ही तो है बस. आउटर लूप कॉलम का है, इनर लूप रो का है. तो पहले तो रो बाय कॉलम चल रहा है, मतलब 0th कॉलम से आखिरी कॉलम तक जा रहे हैं हम. एक बार कॉलम फिक्स कर लिया, फिर उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, डिपेंडिंग ऑन कॉलम के. अगर कॉलम इवन है तो रो 0 से लास्ट तक करो, और कॉलम ऑड है तो नीचे से ऊपर तक करो. इसका नहीं तो और किसका ड्राई रन चाह रहे हो? यही था. मतलब करूँ ड्राई रन या समझ चुके हो? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलोगे तो कितनी होगी? अगर आपसे कोई पूछता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दो, if someone asks you what is space complexity, will you tell him n square or will you tell him constant? What will you tell? अगर कोई भी आपसे इस क्वेश्चन की या अभी तक जो भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर रखे हैं उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछे, तो आप क्या कांस्टेंट बोलोगे, आप क्या n स्क्वायर बोलोगे? हाँ ठीक है भाई, लॉजिकली तो ठीक है, ये इनपुट्स का स्पेस है, ये एक्स्ट्रा स्पेस है. लॉजिकली n स्क्वायर इज इनपुट, constant is extra, like extra is constant. But if someone just asks you space complexity, there is MCQ problem maybe, or there is a interview. So what will you tell him? Will you tell him constant? Will you tell him n square? What will you tell him? You will tell him constant. You will tell him constant. We will tell always the extra space only. We ignore input space. We ignore output space generally. We will always tell the space complexity in terms of extra space plus recursion call stack space. But since currently we are not doing recursion, so ignore recursion call stack space. We are only taking extra space complexity, which is as a space complexity only. So whenever someone asks you space complexity, it is mandatorily like 99%, you can say it is asking about the extra space complexity, extra space which you are creating. So only space complexity means extra space. If they are specifically like telling you
how much space your data structure is taking in the input. So you will have to take n square. How much space you are returning. So you will take currently constant. You are not returning anything. Everything is printed directly. And when someone asks you like how much is extra space, so that is like the space complexity. सर आप क्वेश्चन को डीकोड बहुत जल्दी कर लेते हो, हमें 20 मिनट उसमें ही लग जाते हैं, क्या करें बताओ। अब यार इसका क्या बताएं इलाज। सुबह 5 से 10 बादाम भिगो आधा घंटा और खा लो। कुछ ना होता उससे, कुछ नहीं होता तो कम से कम पेट में तो कुछ चला जाता है थोड़ा बहुत, कुछ तो जाएगा पेट में। देखो यार मतलब प्रैक्टिस से ही होगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता यार। अब मैं कितनी बार बोलूंगा, अब मैं कुछ फालतू की एग्जांपल ले दूं। कोई भी आज अच्छी सिंगिंग कर पा रहा है तो उसने रियाज करे होंगे, कोई भी आज अच्छे से क्रिकेट खेल पा रहा है उसने प्रैक्टिस करी होगी, मैचेस खेले होंगे खूब सारे। कोई भी अगर आज अगर मैं भी कोई भी प्रॉब्लम देखते ही बता देता हूँ कि यार ये इससे सॉल्व होएगी, ऐसे सॉल्व होएगी, इसमें ये लगना होगा, तो ऑब्वियसली मैंने काफी सारी प्रैक्टिस करी है तो ही कर पा रहा हूँ ना। लीड कोड अगर मेरा खोल के देखोगे आप बोलोगे फ्लेक्स कर रहा हूँ, मतलब शो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन लीड कोड खोल के देख लो यार, मतलब पढ़ाते हुए भी टाइम हो गया और खुद पढ़ते हुए भी टाइम हो गया, तो ऐसे एक चुटकी में तो हो नहीं जाएगा कुछ भी। लीड कोड पे जाएंगे अगर हम, सो मेरी आईडी कैसे खुलेगी। ठीक है, तो 788 प्रॉब्लम सॉल्व ऑन लीड कोड, और ये तो सिर्फ लीड कोड है, जीएफजी के अलग हैं, पेप कोडिंग के अलग हैं, और बाकी प्लेटफॉर्म्स के अलग हैं। ओनली ऑन लीड कोड द प्रॉब्लम काउंट इज 788। सो प्रैक्टिस तो है ही ना, तभी कर पा रहा हूँ ना, ऐसे हवा में तो नहीं कर पा रहा, मतलब आया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो इट विल टेक टाइम, डोंट वरी। एंड ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई मेरा लेवल तो लेवल है, ये वो पता नहीं क्या ही कर दिया मैंने, इतने तक पहुंच ही नहीं पाओगे, मेरे से ज्यादा ही पहुंच सकते हो उल्टा। अभी लग रहा होगा बड़ी बात है, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ कोई इतना हार्ड नहीं है। बस इतना जितना ध्यान मैंने दे दिया उतना ही आप दे दो, या फिर आप बोल रहे हो कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप अपने से पढ़ लो, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर खुद से सॉल्व कर सकते हो तो उतना और कर लो, प्लस पॉइंट है। फिर फिर वही ना, विश्वास ही नहीं है मेरे पे, चलो कोई नहीं यार। अभी बताया नहीं, कल बताया था ना, एक का एटलासियन में लगा है, एक का अमेजोन में लगा है। आप तो फैंग को फैंग मानते हो ना, फैंग ही है सब कुछ, तो मैं तो फैंग में हूँ नहीं, आई एम नॉट इन फैंग, आई एम नॉट इन फैंग कंपनी। सो मेरे स्टूडेंट का मेरे से बढ़िया पैकेज लग गया, यही समझ रहे हो। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज कंपेयर टू matrices. Check whether the two matrices are identical or not. Check whether two matrices are equal or not. Identical matrices or equal matrices, or compare two matrices, whatever the question is. Given two matrices, first matrix coordinates m1 n1, second matrix coordinates m2 n2. Print whether the two matrices are identical or not, same or not, equal or not. So how to compare two matrices are even or not, equal or not, sorry. So if I'm saying first matrix, is a 2 cross 3, it is 2 cross 3. So 2 cross 3. And the second matrix is 3 cross 2. The second matrix is 3 cross 2. The second matrix have 3 rows and 2 columns. Three rows and 2 columns.
If these are the two matrices, this is matrix 1, MAT1, this is MAT2. MAT1 is 2 cross 3, 2 rows, 3 columns. MAT2 is 3 rows, 2 columns. And values are something, maybe like this is 10, 20, 30, 40, 50, 60. This is also 10, 20, 30, 40, 50, 60. We have to check whether these two matrices are equal or not. Can these matrices, matrix 1 and matrix 2, can these matrices ever become equal? Like without rotation, without इनको घुमा फिरा के, without rotating it, will it ever become equal, matrix 1 and matrix 2? Obviously not. Why? Because matrix 1 have 2 rows, matrix 2 have 3 rows. If the number of rows are different, matrices are different. They can never be identical. भाई same है तो भाई number of rows तो same होने चाहिए ना. If 2 rows are same, at least the number of rows should be same, because even if we overlap, even if we are saying overlap, then so overlapping will say that it will not completely overlap. Like how can 3 rows be same as 2 rows? So first thing, number of rows should be same. Second thing, number of columns should be same. If any one of these is false, if row is not equal to column, sorry, if row 1 is not equal to row 2, that is first matrix row is not equal to second matrix number of rows, they are not identical. First thing. Similarly, if first matrix column is not equal to second matrix column, again, they are not identical. So what I'm saying, if first matrix is 3 cross 4, second matrix is 5 cross 4, can they ever become equal? Can they ever become equal? First matrix have 3 rows, 4 columns. Second matrix have 5 rows, 4 columns. No, they can never become equal. It is like never possible because number of rows are different. Similarly, if I am saying first matrix have 5 or 3 cross 4 itself, 3 cross 4, and second matrix have maybe 3 cross 5. So can they ever become equal? Number of rows are same. Again, no. The first thing to make two matrices equal are number of rows in the first matrix should be equal to the number of rows in the second matrix. Second thing, number of columns in the first matrix should be equal to the number of columns in the second matrix. Is it clear? First two things. Priority, like first prerequisite for matrices to be equal. एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए. इसके बाद भी हो पाएगा या नहीं वो देखेंगे, लेकिन ये तो होना ही चाहिए भाई. नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Okay, so now we are sure. Now if we are sure that number of rows are same, number of columns are same of both the matrices, then also matrices can be equal or they cannot be equal. So let's take two matrices. If I am taking first matrix of 4 rows 3 columns and second matrix also 4 rows 3 columns, so let me just make a matrix. Identical means एक जैसी, एकदम, मतलब हूबहू दिखनी चाहिए एक दूसरे के. So there are 4 rows and 3 columns. So this is the first matrix. And this is the second matrix. At least with respect to dimensions, are these equal? At least with respect to dimensions. Yes, with respect to dimensions, they are equal. So this is a 4 row 3 column matrix. This is also a 4 row 3 column matrix. 4 rows 3 columns. But value should also be same. What does it mean? If first matrix have 10 at 0, 0, second matrix should also have 10 at 0, 0. If first matrix has 20 at this cell 0, 1, this is R0, R1, R2, R3. This is C0, C1, C2. This is R0, R1, R2, R3. This is C0, C1, C2. So if this has 20 at this cell, second matrix should also have 20. If this has 30 at this cell, this should also have 30. If this has 40, this should also be 40. For each row comma column in same row comma column, R1 comma C0, second matrix should also have same R1 comma C0 value. So if this is 50, this should also be 50. If this is 100, this should also be 100. If this is 60, this should also be 60. Or let's take this as 70. So this should also be 70. If this is 80, this should also be 80. If this is 90, this should also be 90. Like I am giving an example, I am building an example. If the example is like this, up till this point, everything is equal. Dimensions are equal and the values are also equal. So these two matrices can be said they are equal. They are equal. All the values are equal.
and the number of rows and number of columns are always like they should also be equal. So these are identical. Answer is yes. Answer is yes. But these are not equal. Answer is no or false. If I am saying any one value is different, any single value is different, maybe instead of 100, this is 60. So will this matrices become equal? Are these matrices equal? If any single value is different, एक भी value अलग हो जाती है, दोबारा equal नहीं है भाई, अलग अलग है. हर एक जगह से नाक, मुंह, कान, पैर, हाथ सब जगह से सेम होना चाहिए. So how to check whether two matrices are equal or not? First, we will check for dimensions. If dimensions are not same, simply return false or print false. Then what should we check? Then what should we check? Then we should check for the loop. Run a loop. Run a loop for one time only, yes or no? Nested loop for one time. या 4 loop लगेंगे. Will there be 4 loops or will there be 2 loops only? Should there be 4 loops? Like loop number 1, 2 loops. Loop number 1, 2 loops. Loop number 1, 2 loops. Should it be like nested inside nested? Or only we require 2 loops to compare? Compare करने के लिए 2 ही चाहिए ना? Compare this with this. 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 And so on. So we'll only require 2 loops. One loop for row and one loop for column. Only 2 loops will be required. And we will say compare simultaneously. Compare value from first matrix with second matrix. If matrix 1 of row comma column, if it is not equal to matrix 2 of row comma column, return false. Otherwise, if all the values for all the row comma column coordinates, all the rows, all the columns, all the values are same, so I can finally return true. I can finally return true. So if the like approach clear, what we are going to do? We are going to travel across the matrix and check if matrix 1 is equal to matrix 2 for each row comma column. If any one row comma column is not equal, we will return false. Otherwise, in the last case, we will say yes, 2 matrices are equal in dimension also, and they are equal in all the cells also, so they are identical. Okay, so I am writing a matrix, like I am writing the code. Let me just copy this, paste it here. We do not have to print anything. We will say public. What is the output? Output is same or not same. So output should be a string, like it is a string, same or not same inside a string. So return type will be string and function name is identical. How many parameters will be there? Like how many matrices are there? How many matrices are there? The number of matrices are 2. First matrix and second matrix. So I am saying first matrix, integer square bracket, integer square bracket, matrix 1. Similarly, integer square bracket, matrix 2. Row 1 of first, R1, column of first matrix. Similarly, row of second matrix and number of columns of second matrix. So these all will be the parameters and we will return same or not same. If they are same, we will print same. If they are not same, we will print not same. Okay, so whatever this function will return to us, we will print that. System.out.println identical of matrix 1, comma matrix 2, comma R1, comma C1, comma R2, comma C2. Whatever this will return to us, I will print it. How to take the input? According to the question, the input is first take first matrix row column, input all the cells of first matrix, then take second matrix row column and input all the cells of second matrix. What does it mean? It means first take R1, C1, R1, C1, R1 and C1 and input the first matrix. That is declare the first matrix and input all the elements of the first matrix. So I will run a loop and input all the elements of the first matrix. Row is 0, row is less than R1, row plus plus. Similarly, column is 0, column is less than C1, column plus plus. Matrix 1 of row comma column is SCM dot next in. Now after taking the first row column and also the first matrix elements, now I will take the second matrix according to the input format. Input में क्या बोल रखा है? पहले पहली मैट्रिक्स का रो कॉलम लो, फिर पहली मैट्रिक्स के इनपुट लो, सारी वैल्यूज का रो बाय रो,
फिर दूसरी मैट्रिक्स का रो और कॉलम लो और फिर उसकी मैट्रिक्स के सारे वैल्यूज को इनपुट ले लो। तो वही हम कर रहे हैं, अब दूसरी मैट्रिक्स का रो और कॉलम ले रहे हैं। तो R2 इज इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट एंड R2 का कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम C2, और फिर उसी तरह हम पूरी की पूरी दूसरी मैट्रिक्स को भी लूप लगा के मतलब इनपुट ले रहे हैं। तो मैट्रिक्स 2 को हम इनपुट ले लेते हैं, लेस देन R2 and less than C2. Till this point, is it clear to everyone? Till this point, what we are doing? First take input of first matrix, then take input of second matrix, and pass the function matrix 1, matrix 2, first matrix row, first matrix column, second matrix row, second matrix column, and check whether they are equal or not in this function. Return same or return not same as a string. अब तक बताओ क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है किसी को भी? इनपुट हुआ इतना देखने में डर जाते हैं पहले। इनपुट लेना झंझट है एकदम, बिल्कुल इनपुट एकदम झंझट है, ये काफी तगड़ा है। इन दिस इज इनपुटिंग फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज इनपुटिंग सेकंड मैट्रिक्स। देखो इस तरह की गलती मत कर देना। व्हाट यू विल लाइक सम ऑफ यू, व्हाट यू विल डू, you will write these two lines above this and it will become wrong because order will change according to you. What you are saying, take the first row, second row, first column, like first matrix row, first matrix column, second matrix row, second matrix column together, and then take first matrix elements, then take second matrix elements. But this is not the correct order according to the problem. According to the problem, they are saying first matrix row column, then first matrix elements, then second matrix row column, then second matrix elements. First matrix row column elements, then second matrix row column elements of that. Order should be the same. Order should be the same. And it is R2, C2. अब ठीक है? ट्वेंटी एट लाइन ठीक तो करा यार। 28 लाइन पे उसमें क्या दिक्कत है? R1 C1 18 लाइन पे R1 C1 तो टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, पहली मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ रोज, पहली मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट है, सारी रोज सारे कॉलम्स एक एक लूप करके लूप लगा रहे हैं। Okay, so before running a loop to compare, what should we check? पहले दो मैट्रिसेस के ऊपर लूप लगाओ और सारी वैल्यूज को कंपेयर करो। Before comparing values, we should check the dimensions. If number of rows of first matrix, if it is not equal to number of rows of second matrix, so return false. Similarly, or if number of columns of first matrix is not equal to number of columns of second matrix, then also return false. अगर पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स के रोज ही सेम नहीं है तो भी, या फिर पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम सेम नहीं है तो भी रिटर्न फॉल्स करना है। Number of rows should be same as number of columns. Sorry, number of rows of first matrix should be same as number of rows of second matrix. First point. Second point, columns should be same of both the matrices. If any one of this is false, like any one of this is true, that is row 1 is not equal to row 2 or C1 is not equal to C2, return false. If both the rows are same and the columns are same, then compare. So now I will compare. I will run a row loop. If they are equal, like till which point should I run the loop? Can I say R1 also? Can I say R2 also? Because they are equal. अगर R1 और R2 बराबर है, भले ही R1 तक लगा लो लूप, भले ही R2 तक लगा लो, एक ही बात है। Yes or no? Either we can run till R1 or we can run till R2 because both the matrices have same number of rows columns. So I am running till R1. You can also run till R2. And similarly for column, can I run till column 1 or also column 2? It is one and the same thing because column 1 is equal to column 2. अगर equal नहीं होता तो return false हो ही गया, मतलब column अब equal ही है तभी यहाँ पर आए हैं। तो column 1 तक चला सकते हो, column 2 तक चला सकते हो, मर्जी है, जिस मर्जी तक चला सकते हो क्योंकि सेम ही है, मतलब वैल्यू तो सेम ही पड़ी उन दोनों में। Now if any cell of first matrix, if any matrix 1 of row comma column, if it is not equal to matrix 2 of row comma column, if it is not equal, what should we say? What should we return? And it is not return false, but it is not same. It is not same what we are returning. If matrix 1
value is not equal to matrix 2 value, what should be written again? Not same again. They are not identical. Otherwise, agar dimension भी same है, if dimension is also same, and all the values are also same, all the values. So after the loop, return same. They are identical. So they are identical matrices in the last. So let's run the code and check whether it is working or not. Sample test cases are passing. These matrices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are same, equal. But second test case is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and second is like one less dimension. So it is obviously not safe. So let's submit it. All the test cases are passing. So this was a nicer problem, like little bit extra, little bit different. क्या दिख पा रहा है सब कुछ? Is everything visible? नहीं दिख पा रहा. लास्ट लाइन को दोबारा ले आते हैं. नहीं दिख पा रहा तो देखा, ये है इंडिया वाला जुगाड़. अब दिख पा रहा है? अब दिख पा रहा है सब कुछ? Should we do a dry run? Should we do a dry run? सर बस मत पास करे तो, बस मैट्रिक्स पास करें तो. ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स तो पास कर नहीं सकते ना, दोनों मैट्रिक्स पास करनी पड़ेगी. मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 कंपेयर करना है ना, दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, तो दोनों मैट्रिक्स को पास तो करना पड़ेगा चेक करने के लिए दोनों इक्वल है या नहीं. एक मैट्रिक्स तो पास नहीं कर सकते. अच्छा ये बोल रहे हो रो कॉलम पास ना करे तो? हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. आप ये ना पास करो तो भी पॉसिबल है, लेकिन वो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, थोड़े बाद में दिखाऊंगा. अभी के लिए हम पास ले, अभी के लिए हम रो कॉलम पास कर देते हैं. ठीक है मोहित, आप एक ही मैट्रिक्स के कंपेयर कर लो और रॉन्ग आंसर ले आओ, टेस्ट केसेस फेल करवा दो. जब दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना है तो दोनों मैट्रिक्स को ही कंपेयर करना है ना, मतलब दोनों मैट्रिक्स के वैल्यूज को कंपेयर करना है. आप एक ही मैट्रिक्स के कैसे एलिमेंट चेक कर सकते हो? क्या क्या बोलोगे? 10 तो बराबर है ना, उसी से बराबर है ना जिससे मैं सोच रहा हूँ, थोड़ी ना बोलोगे. ऑल नंबर्स आर सेम इन द मैट्रिक्स. अच्छा मैं भी क्वेश्चन गलत समझ गया. एक ही मैट्रिक्स के एलिमेंट चेक करे तो ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन द मैट्रिक्स, उसको आइडेंटिफाई करेंगे. मतलब समझ नहीं आया. एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या लोअर राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू अपर लेफ्ट ट्रायंगल और नॉट, और अपर राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू लोअर लेफ्ट ट्रायंगल और नॉट. वो एक ही मैट्रिक्स में हो सकता है कंपेयर, कि लोअर हाफ अपर हाफ के बराबर है या नहीं, वो पॉसिबल है. लेकिन दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए दोनों मैट्रिक्स चाहिए ही होंगी.
हाँ जी, तब एक ही मैट्रिक्स का पार्ट हो गया अगर हम लोअर लेफ्ट को अपर राइट से कंपेयर कर रहे हैं तो। और ऊप्स पर जोरों शोरों पर काम चल रहा है, बहुत ही तगड़ा कंटेंट आने वाला है, ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी आ जाए। फंक्शनल इंटरफेसेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, जेनरिक्स इन जावा। सो आई एम ट्राइंग कि जितना जल्दी से कंटेंट आ सकता है उतना जल्दी से आ जाए। जो एक्चुअल में कोड होता है ना, एक्चुअल में जो चीजें यूज होती हैं, गेस्ट यूजर, रजिस्टर्ड यूजर, बुक माई शो में ट्राई कर रहा हूँ बनाने की, तो मैं बुक माई शो की मदद से समझाऊंगा। मतलब पढ़ना चाहते हो मेरे से oops, एक बुक माई शो पूरा डिजाइन करेंगे oops में, साथ साथ जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बुक माई शो खुद का बनाते रहेंगे। और कोई पूछेगा कि भाई प्रोजेक्ट दिखा, तो दिखा दोगे कि ये रहा मेरा बुक माई शो, जो भी पूछना है पूछ ले। ऑब्वियसली उसमें फ्रंट एंड बैक एंड नहीं होगा, वो आप खुद से कर सकते हो। इफ यू वांट टू ऐड फ्रंट एंड, इफ यू वांट टू ऐड बैक एंड, you can do it on yourself by learning about JavaScript, by learning about Munchstack or Spring Boot. But we will be making a application which is terminal based, like menu driven program, you can say. सर आपने गारंटी दी थी कि आपके सेशन के बाद oops में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ तो मैं कब मुकर गया? मैं तो मुकरा ही नहीं अभिषेक। ओके, सो आई एम शेयरिंग द प्रॉब्लम लिंक। जब पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया उसके बाद प्रॉब्लम लिंक मांगते हो यार आप लोग, तो जब कई लोग हो। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो थोड़ा मतलब उसी क्वेश्चन पर ध्यान दिया करो जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ये नहीं कि ठीक है जब मैंने टाइम दे दिया कि क्वेश्चन को रीड कर लो तब तो ठीक है, बट व्हेन आई एम डूइंग द प्रॉब्लम, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम, so your entire concentration should be on the explanation and not on reading the problem statement at that moment. हम वो थोड़ी ना है, वायरस थोड़ी ना, 3 इडियट के दो दो हाथ से लिख पाएंगे, दो दो जगह दिमाग चला पाएंगे। Okay, so should we discuss next problem if it is done? Should we discuss the next problem? Adding two matrices. Okay. So next problem is adding two matrices. I have shared the link in the chat. First thing is same, that is take two input matrices, M1, N1, M2, N2. Sorry, this is compare only. First thing is same, that is take input of first matrix, take input of second matrix. Now you have to add the two matrices, and they have themselves said two matrices can only be added if the dimensions are same, if the number of rows of both the matrices are same, and if the number of columns of both the matrices are same. If they are not same, so addition is not possible, so print -1. Like if the two matrices are like these, if this is the first matrix and this is the second matrix, these two matrices cannot be added, they cannot be added.
2, 3 matrix cannot be added with a 3, 2 matrix. Addition of these matrices are not possible, at least addition or subtraction also. So you should say that they cannot be added. So directly print -1. Addition not possible. Addition not possible. Otherwise, if addition is possible, so print the addition of those of those two matrices. So if the first matrix is this, and if the second matrix is, maybe let's copy this and paste it here. Let's say second matrix, I am changing some values. Second matrix is of the same dimensions, which is 4 cross 3. If the first is 4 cross 3, the two matrices can only be added if both the matrices have same dimension, then only. So if I say second matrix have values maybe 30, 10, 20, 40, 50, 10, like random values, it can be 60, 70, 90, 100, again 10, maybe 20. So first thing is, can these matrices be added? Can these matrices be added? First thing is this. Yes. And if these matrices are to be added, what should be the resultant dimensions? जो resultant मिलेगा इन दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे, उसकी क्या डायमेंशन होगी? What will be the rows, number of rows, and what will be the number of columns? It will be same as first matrix and second matrix, 4 cross 3. If first matrix is 4 cross 3, second matrix is 4 cross 3, so the resultant matrix will also be of 4 cross 3 dimension. Resultant will be the same. Addition resultant will be the same dimensions. Although values will be different. Values might be different. So what are the values? Values will be row of 0, column of 0. Row 0, column 0 will be addition of 10 plus 30. Matrix 1 of row 0, column 0 plus matrix 2 of row 0, column 0. So let me first erase all of this. So what we are saying, how we are going to perform addition, how two matrices are getting added. Addition will be row 0, column 0 of first matrix plus row 0 of column 0 of second matrix will be added, and it will be stored at row 0, column 0 of resultant. That is 10 plus 30, it will become 40. 10 plus 30, it will become 40. This cell will be 20 plus 10. 20 plus 10, which is 30. This cell will become 30 plus 20, which is 50. 30 plus 20, which is 50. This cell will become row 1, column 0 first plus row 1, column 0 of second will be placed at row 1, column 0 of resultant. So 40 plus 40, which is 80. Similarly for each cell, 50 plus 50, row 1, column 1 of first plus row 2, like row 1, column 1 of second will be placed at row 1, column 1 of resultant. 100 plus 10 will be placed at 110 here. 70 plus 60, 70 plus 60 will be 130, I guess. It will be placed here. 80 plus 70, 80 plus 70, how much? 150, I guess. 150. 90 plus 90, 180. 100 plus 100, 200. 110 plus 10, 120. And finally 120 plus 20. 120 plus 20 will be 140. So how will you print the resultant? How will you print the resultant, or how will you form the resultant matrix? How will you form the resultant? Okay, that is okay. You will have to create a new matrix. Like, will we have to create a new matrix if we do not want to change the first and we do not want to change the second matrix? अगर मेरे को फर्स्ट मैट्रिक्स को चेंज नहीं करना है, इसको अपडेट नहीं करना है, सेकंड मैट्रिक्स को मेरे को अपडेट नहीं करना है, तो मेरे को रिजल्टेंट के लिए एक और मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी. विल वी हैव टू क्रिएट अ न्यू मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स, यस और नो? So this will be the resultant new matrix, third matrix. This is first matrix MAT1. This is second matrix MAT2. Okay. So will the first if condition will be same? If R1 is not equal to R2, if C1 is not equal to C2, so return -1, return, like you can say return, print -1 or return. First print -1 and return. Yes. Otherwise, what we will say, create a new matrix of the same dimensions of R, C of same dimensions. And now do what? At like, should we run 2 loops only, or should we run 4 loops or 3 loops or 6 loops, whatever? Only 2 loops will be required. Run a loop on row simultaneously on both the matrices. Run a loop on column simultaneously on both the matrices. So 10
plus 10, like 10 plus 30, add them. 20 plus 10, add them. 30 plus 10, 20, add them and store it in the resultant. 40 plus 40, add them and store in the same index. So this will go on happening for each row comma column, and we will finally print the resultant. We will print the final resultant matrix. Is it clear? Instead of comparing them, now we are adding them. Just this is changed. पहले हम कंपेयर कर रहे थे, अब हम ऐड कर रहे हैं, इतना सा फर्क है. नॉट होमवर्क, होमवर्क तो नहीं कर सकता, लेकिन आई एम गिविंग टाइम, आई एम गिविंग 5 मिनट्स टाइम. ट्राई इट, खुद से ट्राई करने की ट्राई मतलब कोशिश करो. अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं करवा ही दूंगा. कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा इसी बात पर कि अगर हो जाता है तो. एंड दोस हु आर एक्चुअली एबल टू डू इट, देन प्लीज राइट डन इन द चैट. बस take care of the corner case. Please take care of the corner case. If two matrices cannot be added, that is dimensions are not same, rows are not same, or columns are not same. So print -1. Do not print the matrix because matrix addition is not possible in case of not equal dimensions, unequal dimensions. But you have to print -1. Don't simply return, print -1 and then return. Okay, now try the problem. I am like muting myself. अच्छा, मेरे बोलते बोलते डन कर रहे हो. देखो पागल ना बनाना. क्या क्या नाम किस किसने डन लिखा है? फैजल, 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 फैजल. यार दिख तो नहीं रहा फैजल. अच्छा ये रहा, ठीक है. फैजल तो है. बाकी अवधेश, अवधेश, ठीक है, अवधेश भी है. चंदन, चंदन भी है. मोहम्मद अली अंसारी, पकड़ लिया. अच्छा आयरन स्टार्क है क्या? ठीक है, आयरन स्टार्क भी है. लालजी सिंह, चलो आप भी हो. मतलब यार कर लो यार, कोई मजाक में मत लिख देना ऐसे ही डन डन, कि हो जाएगा. हो जाने में और होने में फर्क है. आपके बैच के साथ मैंने रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन ले रखा है क्या? फ्रॉम लाइक विद योर बैच हैव आई टेकन रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन? आधा लिया था. आप ही के बैच के साथ लिया था क्या? मोहम्मद अली अंसारी, वो तो एलीट बैच में लिया था जितना मुझे याद आ रहा है, आधा सिर्फ रेज्यूमे बिल्डिंग. स्पाइरल मैट्रिक्स का आइडिया दे देते, वो क्वेश्चन ही बहुत तगड़ा है, वो बहुत अलग क्वेश्चन है, वो हार्ड प्रॉब्लम है. हार्ड तो नहीं लेकिन एटलीस्ट मीडियम तो है ही है. तेजस्वी, ठीक है, किसी दिन रेज्यूमे बिल्डिंग भी के ऊपर डिस्कस कर लेंगे. जिस दिन पढ़ाई करने का मन नहीं होगा उस दिन रेज्यूमे कैसे बनाना है बढ़िया सा वो देख लेंगे. कौन सा क्या नाम है? ये क्या नाम है, किसका क्या नाम है भाई? पूरा तो लिखा करो सेंटेंस. शांतनु जावास्क्रिप्ट, ये तो मेरे को भी पहली बार पता चला है. इसने लिखा है शांतनु जावास्क्रिप्ट.
ठीक है, so should I write the code now? Should I write the code? 21 submissions only. यार इजी तो था, कंपेयर करना आता है तो ऐड भी करना तो आया जाना चाहिए था, चलो कोई नहीं. So if I will copy the code of comparing, I will copy this code. I will go to the problem adding two matrices. I will paste this code. Okay, input the first matrix, input the second matrix, and now what we are doing? We are saying like make the matrix, third matrix inside this function only, adding two matrices, or add two matrix like this, add two matrices. And if it is not possible, so print -1 and return. If it is possible, so add them and print it. Add the print the resultant if it is possible. So if it is not possible, if row 1 is not equal to row 2 or column 1 is not equal to column 2, what we will say? System.out.println -1, and we will return. Yes or no? Corner case. If matrices are not equal, just simply return and print -1. Otherwise, if it is possible, so what will be the resultant size? What will be the resultant dimensions? The dimensions of resultant. If rows are equal, columns are equal. Rows कितने dimensions का है और columns कितने dimension का है? Resultant. Same input जैसा. मतलब either I can take R1, C1, or I can take R2, C1, or R2, C2, or R1, C2, anything, because R1 and R2 are same, C1 and C2 are same. So it is your wish, you can take it anything. I am taking R1, C1. Run a loop, and now instead of doing this, what we are saying, resultant of row, column will be matrix 1 of row, column plus matrix 2 of row, column. Yes or no? For each row, column, add the values and store it in resultant. हर सेल पे जाओ, 0 0 पर जाओ और इसका और इसका वैल्यू ऐड करके यहाँ पे स्टोर कर दो, इसका और इसका वैल्यू ऐड करके यहाँ पे स्टोर कर दो. Go to each and every row and column, and in the resultant of row, column, add matrix 1 of row, column plus matrix 2 of row, column. And finally, we will also print it. Like we are just now currently making it, we will also print it. I am printing it simultaneously. Like as soon as I am storing it, I am also printing it. The resultant of row, column, along with a space and along with a system.out.println. Okay, let's run the code. And it is not returning anything. So return type is nothing. It is not returning anything. Return type should be void. We are directly printing it. We are not returning anything. So return type is nothing, just return. Okay, so if the matrices are possible to be added, so whatever the addition is there, print it. If matrices are not possible, it is not possible to add the two matrices, dimensions are not equal, so print -1. So both the corner cases as well as the addition case, both are getting submitted. Let's submit also. All the test cases are passing. So this is the code. Should I also bring the main method? It is same. It is same as the previous code only. Okay. But I am pasting it in the discussion if you want. ठीक है, डिस्कशन में मैंने पूरा कोड डाल दिया है और ओपन बोर्ड में मैंने सिर्फ जो मेन फंक्शन है वो डाला है. और बता देना प्लीज अगर किसी को भी किसी भी लाइन में डाउट है. इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द लाइंस, बेस केस और कॉर्नर केस, डायमेंशंस, लूप और दिस फॉर्मूला, एनीवन एनी लाइन यू कैन आस्क. इफ स्टेटमेंट में रिटर्न नहीं दिया तो प्रॉब्लम होगा क्या? हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगा. मतलब आप डायमेंशंस आप लूप लगाओगे और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, मतलब एरर आ जाएगा. क्योंकि आप बोल रहे हो इफ यू आर सेइंग दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स, इफ यू आर सेइंग रन अ लूप ऑन थर्ड रो,
this matrix does not have third row, although this matrix have third row, this does not have third row. Similarly, if you are saying run a loop on third column, although this matrix have third column, but this does not have third column. तो जो चीज है ही नहीं, अगर उसके ऊपर लूप लगाओगे, so it will give you an error, it will give you exception, index out of bound exception. So you will have to return. This is important. You cannot add two matrices if the dimensions are not equal. पढ़ेंगे आगे जाके एक्सेप्शंस क्या होती है। एक्सेप्शंस कुछ नहीं होते, एरर ही होते हैं। जैसे कंपाइलेशन एरर होते हैं वैसे एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन जनरली रन टाइम पे आती है, ऑल तो कंपाइलेशन में भी आ जाती है कुछ, लेकिन जनरली एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर्स जो रन करते हुए आते हैं। जैसे डिवीजन बाय जीरो, एग्जांपल इज डिवीजन बाय जीरो, एग्जांपल इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। If the array was of 5 size and you want to access the fifth element, fifth index, sixth index, seventh index, -1 index, -2 index, is it possible to access fifth index and more, or -1 index and less? No. So it will give you an index out of bound exception. कभी ट्राई करा है इस तरह की पंक्तियां करने की, ट्राई करी है? ठीक है, देखा है वो एक्सेप्शन कैसे आता है? क्या दिखाऊं? ठीक है, देख रखा है ना, अच्छी बात है। सर पैरामीटर बता दीजिए बस, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 ले सकते हैं क्या? देखो, इफ आई एम सेइंग रो 1 इज नॉट इक्वल टू रो 2, सो रिटर्न। कॉलम 1 इज नॉट इक्वल टू कॉलम 2, सो अगेन रिटर्न। सो मैं यहाँ पे तभी आ रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिस पॉइंट, आई एम रनिंग दिस फॉर लूप ओनली व्हेन रो 1 इज इक्वल टू रो 2 and column 1 is equal to column 2. So even if I write row 2 here, even if I write column 2 here, it is still the same, because row 1 is equal to column 1, sorry, row 2, and column 1 is equal to column 2. Both matrices have equal rows, equal columns. So you can take row 2 also, you can take column 2 also, because these are equal. दो matrices के number of rows equal हैं, दो matrices के number of columns equal है। तो number of columns in the first matrix ले लो, number of columns in the second matrix ले लो, है तो दोनों तीन तीन ही। मास्टर जी आ गए, सुन लो मास्टर जी की। देखो यार, जो मतलब कुछ लोग हरकतें करते हैं वो मैंने भी कर रखी है। आप जैसे जो हरकतें कर सकते हो वो मैंने भी कर रखी है, और अभी भी कर ही रहा हूँ। अभी कॉलेज तो जाता ही हूँ मैं, कि भाई टीचर आगे पढ़ा रही है, पीछे कानों में लीड लगाई, मस्त गाने सुन रहे हैं या खुद का कुछ और देख रहे हैं, टीचर को पढ़ाते रहे हम लोग। काम तो करे ये भी हम नहीं, कॉलेज में जाके कोई पढ़ाई तो होती नहीं है, और ना उनको पढ़ाना आता कॉलेज वालों को। लेकिन एटलीस्ट मेरी क्लास में ध्यान दे दो, ये जोड़े हाथ। सर आपने एक चीज एक्स्ट्रा की है हमसे, पढ़ाई। Okay, so those who want to ask anything, they can raise their hand. Otherwise, class is end from my side. मजा आ रहा है क्लासेस में? लाइक आर यू एंजॉइंग डीएसए, या सब कुछ हार्ड ही लग रहा है अभी भी? सब कुछ सर के ऊपर से ही जा रहा है? ठीक है,
अभिषेक क्या पूछना है? सर वो प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे आपने बोला कि फ्रंट एंड बैक एंड खुद अपलोड करना, तो प्रोजेक्ट में आप क्या बताओगे? मतलब जो पूरा डिजाइन है, अब अगर मैं आपको एक ग्लिम्स सा दे दूं जैसे कि बुक माई शो का, तो फिर बुक माई शो में होगा क्या, लॉजिक भी तो होगा। मतलब अगर फ्रंट एंड लिखना चाहते हो या बैक एंड लिखना चाहते हो तो कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ मॉडल्स होंगे, मतलब डेटा स्ट्रक्चर होंगे, और ये वाले तो नहीं होंगे। दूसरे वाले कोड दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं बुक माई शो खोलूँ, हम गया बुक माई शो, हाँ। तो भाई बुक माई शो में एक तो आपका ड्राइवर कोड होगा, मतलब इनपुट आउटपुट करने के लिए। फिर आपका कुछ ना कुछ जॉनर होगा, गेस्ट यूजर होगा, रजिस्टर्ड यूजर होगा, मतलब जो जिस यूजर ने रजिस्टर कर रखा है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि मूवी देख भी सकता है कौन कौन सी लगी हुई है, और जो कि बुक भी कर सकता है। गेस्ट यूजर क्या कर सकता है, वो सिर्फ देख देख सकता है, वो बुक नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मैं शो की बात करूं, मतलब एक थिएटर में पर्टिकुलर क्या क्या शो के पास क्या क्या चीजें हैं, तो ये सब जो चीजें हैं ये तो ऊप्स में ही कर सकते हैं ना। मतलब ये आप डायरेक्टली फ्रंट एंड बैक एंड में तो कर नहीं सकते, इसके लिए तो ऊप्स ही चाहिए। जावा स्क्रिप्ट में कर लो, जावा में कर लो, सी प्लस प्लस में कर लो, पाइथन में कर लो, जिस मर्जी में कर लो, ऊप्स ही चाहिए इन सबके लिए, ये मॉडल्स बनाने के लिए। या फिर बेसिकली आप बोल सकते हो फ्रंट एंड लिखने के लिए, मल्टी थ्रेडिंग के लिए, इन सब के लिए भी। मतलब फ्रंट एंड अभी के लिए तो हम बस ऐसे लिख रहे हैं, ये है फ्रंट एंड हमारा, ये है हमारा फ्रंट एंड, जो कि क्या कर रहा है, जो कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स बना रहा है और काम कर रहा है। मतलब डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कर रहे हैं। एक बार सर्च करना नेट पर, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होते हैं, समझ आएगा। हम सर क्या करेंगे, टर्मिनल में ही इनपुट आउटपुट लेंगे, टर्मिनल के थ्रू ही। ब्राउजर पे नहीं आउटपुट शो होगा सर? हाँ, ब्राउजर पे नहीं होगा, टर्मिनल पे। ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये काला सा डब्बा, यस यहीं सर। पे देखेंगे हम। मैं सिखाऊंगा VS कोड पे कैसे करना है कोडिंग, मतलब ऑफलाइन पे कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम जो भी इनपुट आउटपुट करना होगा वो करेंगे। अभी अगर हैकर रैंक पे करना हो तो कहाँ करते हैं, वो जो नीचे बनाए आते हैं इनपुट आउटपुट। VS कोड में करना होगा तो नीचे ये जो टर्मिनल बनाता है यहाँ पे करेंगे इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के लिए बस हमारा इतना सा रहेगा कि कोई भी बैकएंड डेटाबेस नहीं होगा जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। कोई भी फ्रंट एंड में एज सच कोई वो नहीं होगा, यूजर इंटरफेस के भाई कोई ऐप बना दी, कोई वेब ऐप बना दी, वो कुछ नहीं होगा, बस टर्मिनल पे होगा, इतना सा फर्क है। लेकिन वो बनाने में भी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, जावास्क्रिप्ट आती है तो वो बन जाएगा 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में। और सर इसमें अगर हम फ्रंट एंड ऐड कर सके तो कर सकते हैं या नहीं? हाँ, करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आना चाहिए वो जावा वाले कोड को कैसे, उसी सेम कोड को आपको बेसिकली जावास्क्रिप्ट में करना है यूज, वो आना चाहिए। क्योंकि फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट लगेगी, ये कोड हम जावा में लिखेंगे। ठीक। ठीक है विशाल, और ये अनम्यूट भी नहीं कर पा रहा मैं आपको। हाँ, हेलो सर, वो शीट की लिंक सर, डेटा स्ट्रक्चर शीट की लिंक नहीं मिली सर मुझे। व्हाट्सएप ग्रुप पे हुआ? नहीं हूँ सर। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही नहीं हो, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो, नहीं ऑफिशियल सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे? नहीं सर। कमाल है यार। ठीक है, मैंने ये लिंक शेयर किया है, इसको यूज कैसे करना है, मतलब ये तो HTML फॉर्मेट है, इसको आप डाउनलोड करोगे। अगर डायरेक्टली ओपन करोगे तो वो तो बहुत ही गंदा सा दिखेगा, मैं दिखाता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ ना इसी शीट को, अगर हम इस शीट को डायरेक्टली ओपन करते हैं, 2 मिनट रुके हैं, DSA नोट्स में अगर मैं इस शीट को डायरेक्टली ओपन करता हूँ तो ये ऐसे दिखने लगेगी। ऐसे ही नहीं चाहिए हमें, चाहिए कैसी, जैसे मैं मेरे को दिख रही है इस तरह की चाहिए। अगर इस तरह की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले डाउनलोड करना, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, वहां से डाउनलोड करना। फिर डाउनलोड करने के बाद क्या करना, जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली क्रोम यूज कर रहे होगे, तो क्रोम में जाना, बुकमार्क्स में जाना, बुकमार्क मैनेजर में जाना, यहाँ पर डॉट पे क्लिक करना। इसको रिकॉर्डिंग में चेकआउट कर लेना अगर ज़्यादा तेज हो गया तो। बुकमार्क में गए, बुकमार्क मैनेजर में गए, 3 वाले डॉट्स पे क्लिक करा और इम्पोर्ट बुकमार्क कर लिया, और जो वो फाइल थी उसको सेलेक्ट कर लो, जो वो फाइल थी उसको सेलेक्ट कर लो। मतलब मैंने फाइल DSA नोट्स में जाके DSA शीट जो फाइल थी उसको सेलेक्ट करा तो ये इम्पोर्ट हो गई। अब देख रहे हो ये आ गई, अब इसको यूज करो बिंदास, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर थोड़ा जल्दी हो गया था, मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, तो रिकॉर्डिंग देख लेना कैसे करना है। ओके, सफारी में कैसे करेंगे यार, अब डेवलपर हो आप लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो, खुद यूट्यूब पे देखो यार, इतना तो खुद से देख सकते हो, गूगल करो भाई।
ठीक है, so then I am ending the class for today. Let's meet tomorrow, sorry not tomorrow but on Monday. सर आपने खाना दे के मोटिवेशन दे दी ठीक है, I am giving the class to Shreya. She will continue the class. If you want to ask any doubts, you can ask to her. So bye bye everyone. MERN stack is equal to SD, not, it is not equal to SD. MERN stack is a particular, like you can say, collection of frameworks, collection of technology. M for MERN, M for Mongo, E for Express, R for React, and N for Node.js. So Node is for backend, Express is for backend, MERN is for database, and R is for front-end React. So like everything, it is a collection of technology which you can use to make, like to learn about web development. So एक तरीका है वेब डेवलपमेंट सीखने का. सीखना चाहो तो जावा में सीख लो, सीखना चाहो तो पाइथन में सीख लो, किसी में भी सीख सकते हो. उसमें से एक तरीका है MERN स्टैक सीख लो, डेटाबेस MERN सीख लो, एक्सप्रेस और नोड की मदद से बैकएंड और रिएक्ट की मदद से फ्रंट एंड. ठीक है, तो एंड कर रहा हूँ मैं. बाय बाय एवरीवन, बाय बाय. Okay, let's begin. Hello. Am I audible? Okay. So shall we start revising the things? Okay, let's start. The first question which was taken today was print lower triangular matrix, right? So this question is similar to print upper triangular matrix. Just you have to change the condition. What will be lower triangular matrix? Tell me. If you are given a matrix, this part, wherever there is whatever part of the matrix is lower triangle, you need to print the element as it is. Otherwise, you need to print 0 as given in the question. Okay. So if this is the matrix, if this is the matrix, then this part is the lower triangle, right? And rest all the parts are apart from this. So you have to make them 0 and other remain as it is. So shall I straight away discuss the code of this or anybody else? Again, my voice is breaking. My voice is breaking, tell me. Now tell me whether it's okay now or not. Okay, if it breaks, please write in the chat straight away. Okay, so let's discuss the code. The code will be now everybody's familiar with taking inputs. Nobody has doubt in taking inputs, right? Okay, so how we have to print this lower triangular? We will first of all loop along row, then along column, and the condition you need to check is for this particular matrix, which all positions will be there, whose value you don't have to change, the values which have to not change. For example, for 0th row, what are the values which you need to print? Just 0, right? Then for first row, what all values you need to print? 0 and 1, right? For 2, what all values you need to print? 0, 1, 2, right? So what condition, what relation do you find between row and columns? What is the relation between row and columns? These are row numbers and these are column numbers. The row numbers at which you have to print what many column numbers. So can you see that whenever column number, whenever these are column numbers, right? And this is row number. Whenever column number is lesser than or equals to row number, then we are printing the element as it is. Otherwise, we are making it 0. Can you observe this thing?
These are column numbers. Okay, these are column numbers. No, I'll be just revising. And here, these are row numbers. So tell me, what can you observe? What is the relation? Is everybody able to see the relation between column and row numbers? Whenever the column numbers are lesser than or equals to row number, print the element as it is, otherwise make the element 0, right? So that's what we are doing. That's what we are doing in this. If this condition is followed, column number is lesser than or equals to row, then print the element as it is. Otherwise, if any other condition follows, if any other column or row number is there, then straight away make it 0. Straight away print 0. And then why system dot print ln? Because in the question, you are going to print the like whatever format you are printing. For every row, you need to change the line. That's why we have written system dot out dot print ln. Okay, is this question clear to everybody? Tell me. Yes, shall I move to the next question? Or if you have doubts, you can ask. Are you able to visualize this condition? The main thing is this condition, and we have already done patterns. So I don't think anybody will be facing problem in this thing. Okay, let's move to the next question. The next question was, please tell me the next question. Print row wise with condition. Was this the next question, or print column wise? Anyone, please write in the chat which one was the next question. Column. Okay. So the question is print the column wise with given condition, and the condition is print the matrix columns wise starting from the 0th column. See, whenever they are asking to print a column wise, now how will you recognize whether the outer loop should be on rows or whether it should be on columns? How will you recognize? It will be according to the demand of the question. See, we did 2 questions yesterday, printing alternate rows, and one was printing alternate columns. So alternate rows means for a particular row, you need to print all the column values. Okay, so in that condition, you will like make row as the outer loop and column as the inner loop. But in the next question, which was print or like what was this? Print alternate column, right? In that, you have to go at a particular column, and for that column value, you need to print all the row values, right? Was the question like this? So in that case, going to a particular column and printing all the row values, column will be the external loop and the internal loop will be rows. Okay, internal loop will be on rows. Okay, so similarly, let's see this question. Print the matrix column wise starting from 0th column such that even column is traversed from top to bottom. Okay, the question is, you have to print this matrix in such a way, wave kind of means, first of all, you have to print the, if like column, what they have given, even column. Okay, if there is an even column, then you have to print as it is. Otherwise, you need to print from lower side, like the lowermost row to uppermost row. So if you see in this matrix, then 3, 3, 4, since it is 0th column, it will be 0th column. So you will print the 0th column means a even numbered column. So you need to print 3, 3, 4 as it is. But as you move to the next column, it becomes 1. 1 is not even, 1 is not even. So you need to print it from backwards. Like you will print 5 first, 0, then 1. Okay, then you will move to the next column. The next column will be what? It will be 2. It will be 2, which is even. So for even column, you need to print as it is, 2, 2, 4. So how can we do this? Simple. Now tell me which loop should be the outer one and which loop should be the internal one. Which loop should I take as the outer one and which I should take as the internal one? How to recognize that? I already told you. Tell me which value is varying, and you need to pick initially which thing you need to pick up, a row value or a column value. First recognize this in a question. If you are given a matrix question, first you should choose row value or column value. Anybody? Are you able to think of this?
Okay, someone, Azmail, have you written row wise right now? No, you have written it 9:37. Yes, okay. So why row wise? See, what we can do is we just need to vary the row numbers. So why not taking column as the external loop? Why not taking column as external loop? Because we will go for a column number and check whether it's even or odd. If it is even, we will vary the row number from 0 to n and print it as. But if it is even, like not even, it is odd, then you have to like loop from row equals to n to row equals to 0 and then print it. So what we are choosing is we are choosing column value. So column value should be taken as the external loop. Did you understand why column value as the external loop? If you take row in that scenario, what will be happening? Tell me. Anybody? If you take row, then will you be able to print such a pattern? Tell me. Anybody who can visualize these things? No. So for that purpose, what we are doing is we are going to a particular column and checking whether it is even column or odd column and accordingly printing the rows. Okay, row values. So let's see the code. The code is, first of all, taking all the inputs. Then what we are doing is we are taking a loop on columns. Why not rows? We already discussed. And then for that particular column, we are checking whether it is even or odd. If it is even, then according to the question, you have to print from 0 to n. Row number 0 to how many rows are there total. Okay. But if it is not so, if the column number is 1, 3, 5, and so on, then for that purpose, you have to print the row just reverse of how we printed in even. That is from lower, low to up, like down to up. Okay. Can you see this? Why rows -1? Why not rows? Are you clear with this? Because it's 0 based indexing. So the last index will be n-1. And similarly, we will print matrix of row and column. And after that, for each column, since they are asking to break the lines, like move to the next line for printing the next column value. So we will use this syntax to move to the next row while printing. Okay, I'm not talking about this. I'm talking about this. After we have printed 3, 3, 4, now we need to change the line. So for that purpose, what we are doing is we are using system.out.println. Okay, let's move to the next question. The next question was print row wise with condition. Same thing, print. Now, can you visualize this question? Similar question. Here, what you have to do is you need to apply the same wave method just on row numbers. So tell me which loop should we take out as the external loop? Whether we should loop, outer loop should be on rows or columns? Because we have to pick up a particular row. Yes, now you understood, Azmail. Good. It should be on rows. Why on rows? Because we have to check for a particular row whether it is even or odd. If it is even, print all the column values in the manner they are occurring. But if it is odd, like odd row number, then you have to do reverse printing. That is from backwards to frontwards. Okay. So this question will be the same thing as similar, just we discussed before of it. But here what will be done is we have to reverse the loops. You can see here IDX, JPX is used. So we are first of all looping on rows. Okay, not this one. Okay, we can see this one. So first of all, the external loop which we are using is on rows, because for each row number, we need to check whether it is even. If it is even, go for printing the entire column as it is. If it is not even, if it is odd, then do reverse printing. Okay, I think this question might be also clear. Anybody who has doubts still, any doubt till here? Any doubt? If you're not able to understand anything, please tell me. I'll make sure to make you understand. If no doubts, write no in the chat. See, these questions are not clear now. There would be a question spiral matrix coming. Like they might have added this question. It is very important question, very interesting questions, and maza aa jayega wo question karke, which will be following something this kind of concept, reverse printing,
and then forward printing, these things. Okay, so be good with these concepts at least till by using these questions. Doing these questions will build this kind of concepts so that you don't face much difficulty in that spiral matrix problem. Okay, Sagar, you raised your hand. Yes, Sagar. मैम मैं ये पूछ रहा था मैम, जैसे ये जो क्वेश्चन में मैम हमने रो वाइज चलाया है, तो इसमें हमने जैसे मिडिल वाली जो आउटपुट था ना मैम, क्वेश्चन दिखाइएगा, उसमें 2 और 3 फ्लिप हुए हैं ना? 2 और 3 फ्लिप हुए, क्या क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन में ये जैसे ये जो आउटपुट दिया है ना मैम, इसमें जैसे 3 और 2 और इसमें 2 और 3 ऐसा चल रहा है, बट उसमें मतलब जो इससे पहले वाला कॉलम वाइज क्वेश्चन था, उसमें मैम जैसे ये जो मिडिल वाली जो कॉलम है 501, उसको उन्होंने रो बना दिया है, तो वो डिफरेंट टाइप से वर्क कर रहा है ना दोनों इसमें? देखिए, बस द क्वेश्चन समझिए, बस यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर रो वैल्यू, जैसे 0 पे गए तो 0 को चेक करना कि ये इवन है, ये रो नंबर इवन है, हाँ इवन है, तो इसको 312 जैसे। मैम मेरा क्वेश्चन ये था जैसे कि अगर कॉलम वाले, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप से कोड्स थे, तो जैसे इसमें भी वो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी तो ऐसा कर सकते थे ना, जब 334 चल रहा है आउटपुट में, तो 105 वो भी तो मैम जैसे इस हिसाब से वो आउटपुट सही होता। देखिए, प्रिंटिंग का पैटर्न सेम है। देखिए, जैसे इसमें भी पहले रोज के अलोंग प्रिंट किया है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसी ही प्रिंटिंग हुई थी, पर क्वेश्चन डिफरेंट है। मतलब क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको रो नंबर्स को चेक करना है और उस वाले में कॉलम नंबर्स को चेक करना था, और अगर कॉलम नंबर्स सही होते तो फिर उन रो वैल्यूज मतलब 334 प्रिंट करते। अगर ये वाली 1 जो है वो ऑड हो गई तो अब आप इसको रिवर्स प्रिंटिंग करिए, 501 करिए। तो अब इधर आप किसको रिवर्स कर रहे हो? कॉलम वैल्यूज को। और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर रो नंबर ऑड है तो रो को ही रिवर्स करना है, दैट इज 203 बन गया। तो आर यू आस्किंग समथिंग लाइक दिस? ठीक है मैम। नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क अगेन। कंफ्यूजन देखिए मैम, वो छोटा सा ये कंफ्यूजन है कि जैसे दोनों सिमिलर वर्क करना चाहिए था। जैसे इसमें जैसे हमारा जो पैटर्न चल रहा है 312203 है ना, तो उसमें भी वैसा चलना चाहिए जो कॉलम में था कि 334। उसमें मैं जाती हूँ, एक मिनट, उसमें भी मैं जाती हूँ, प्रिंट कॉलम वाइज विद गिवन कंडीशन। हाँ, इसमें क्या? इसमें भी कॉलम उसी टाइप से चलना चाहिए था, जैसे कि आंसर जो था हमारा 334 फिर 105 चलना था। अच्छा, आई थिंक यू आर आस्किंग कि जैसे 334 है तो वैसे आंसर में भी 334 ऐसे प्रिंट करना चाहिए था, फिर 501 है तो उसको रिवर्स में, ऐसा यू आर आस्किंग ना? ये पूछ रहा था मैं। हाँ, नहीं तो पर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि आपको रो वाइज ही प्रिंट करना है तो रो वाइज प्रिंट कर दीजिए, पर ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है कि अब जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हो वैसे ही प्रिंट भी करो। तो मैम तो आप ऐसे कोड सेम ही रहेगा इन दोनों का? नहीं, कोड सेम नहीं रहेगा क्योंकि इसमें आप रो वाइज प्रिंट कर दे रहे हो और इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे व्हाट कैन चेंजेस आई विल टेल यू। इफ कॉलम मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 देन वी आर प्रिंटिंग अ रो कॉलम वैल्यू ना, तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू, मतलब 1-2 चीजें चेंज करनी होगी, या तो कॉलम पहले रो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बट देयर कैन बी क्वेश्चन व्हाट यू आर आस्किंग, लाइक आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर आस्किंग। डू यू वांट मी टू राइट व्हाट कोड वी कैन राइट फॉर दिस? हाँ मैम, अगर मैम पुराने वाले कोड में थोड़ा समझा दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। द आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन शुड बी 3 और फिर 3 ऐसे भी इधर भी आना चाहिए, फिर इधर 4 आना चाहिए, और उसके बाद यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए और यहाँ 1 आना चाहिए, राइट? ऐसा कुछ। और फिर नेक्स्ट वाले को 2 ऐसा, फिर 2 ऐसा, फिर 4 ऐसा, राइट? यस मैम। So what we can do is, instead of printing along the rows, we can print on columns. Like क्या कर सकते हैं कि I will show you. We went on to a particular column value. We checked whether it is a even or not. If it is even, print as it is. Print as it is. Then column value, like row value, will get updated, and instead of row column, you can print column row case. Instead of row column, you can print column row.
but I'm not very sure whether it will work with all dimensions or not. Agar m or n different raha to it can give you like error, it can throw you runtime error. So in that case, let me see. Okay, m and n can be different, so in that case it might throw you runtime error. हाँ, समझ रहे what I'm saying? बस यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ ना तो ये रो कॉलम की जगह मैं कॉलम रो प्रिंट कर दूंगी, पर ऐसा हो सकता है कि जब कॉलम नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो और कॉलम्स डिफरेंट हो तब ये रन टाइम एरर थ्रो कर दे. Okay, so okay. for that we have to write separate. For dealing it with, we have to write separate code. Okay. Yes. So let's move to the next question. The next question will be compare two matrices, right? So tell me, when can you compare? Have we done a question compare two arrays? We have done one question called compare arrays. Means you have to identify whether both the arrays are identical or not. In that we have dealt with a case that if the size of both the arrays are different, can we say that they are identical? Agar arrays ki size different hai, can we say if they are identical? No. Okay. And again, you have to, after, if it is satisfied that both the size of both the arrays are same, then it's okay. Now you have to go on for checking each element at an index, whether the corresponding elements are same or not. For example, in the first array, at 0th index, 1 is stored. So in the second array also, at 0th index, 1 has to be stored. If any other element is there, then straight away we used to return false from there, showing that it is not identical, right? So similarly, you have to identify whether two matrices are identical or not. For that purpose, you will be given 4 dimensions, M1, N1, M2, N2. So tell me, in what cases you can't compare matrix? Like in arrays, we dealt with a condition that if size of both the arrays are different, then we could not compare the arrays. Similarly, in matrix, can you compare a matrix in which the number of rows are different? Two matrix, one with 5 rows, one with 3 rows. So ऐसे non-identical हो गया. Identical means they should be exactly similar. Okay. And if the number of columns also differ, any one of them differs or both of them differ, then in that case, you can conclude from there itself that it is not identical, right? Yes. And if this condition gets satisfied, that all the dimensions are same, row numbers are same, column numbers are same. Now, next what you need to check is whether each element is equal or not. Whether each element like at a particular row column value, is it equal in both the matrices? For example, we have seen, let's see this matrix. In this matrix, 3, 3, 3, 3, row number same, column number same. So we can go on for checking the elements. So all the corresponding elements are same at every row column value. So we can conclude that they are same. But let's see this one. In this one, we see that there are 3 rows and there will be 2 rows over here. So can you say that we can compare the elements now? From then and there itself, we can conclude that the matrices are not going to be identical. So let's see the code. In the code, like R1, C1, R2, C2 is the size or the dimensions of the matrices. R1, C1 is for the first one and R2, C2 is for the second one. Now we will check whether row numbers are same or not. If they are not same, then we can conclude not same, not identical. If column numbers are also different, then in that case also not same. Otherwise, if row numbers are also same and column numbers are same, then go on for checking each element. How will you compare each element? Since R1 and C1 is same, R1 and R2 is same, C1 and C2 is same. So can we do it in using 2 loops only? Do we need to make separate loop for matrix 2? No, because size to sabki same hai. So indexing will be obviously right. So what we are doing is we are comparing at a particular row column value which element is present in matrix 1 and then comparing it with which value is present at a particular row column value in matrix 2. If they are not equal, at any instance we found out that there's elements are not equal, then and there itself we will return not same. Otherwise, if we have compared all the elements and we haven't encountered this situation, that means that matrix is same, right? So we will return same. Okay. Is this question clear? Was it too fast?
Was my pace too fast? If it is okay, please write in the chat. Any doubt why we haven't? Okay. Cool. Great. No, ma'am, it's okay. Okay. Let's move to the next question. No. The next question is add two matrices. Similar concept to as compare two matrices. In this, what happens? Can you add in what situations you can't add matrices? Tell me. In what all situations you can't add two elements or two matrices? Same condition. If the number of row differs or number of column differs, then can you add the matrices? No. So you can only add identical matrix, not in terms of element, but in terms of dimensions. Okay. So for that purpose, you need to, they have given print -1 if it is not possible. If it is not possible to add two elements or two matrices, then you have to print -1. Else what you have to do is you have to make a resultant matrix. In that resultant matrix, index the sum of what the elements which is index in both the matrices. For example, the row numbers are same, the column numbers are also same. So we can go on for adding the this matrices, right? So we went on 0, 0. So we have to take the element which is present at 0, 0th index in this matrix, and we have to take the element which is present at 0, 0th at this in this matrix. Now add up both these, 9 plus 1, it will give you 10. So in the resulted matrix, at the same index, at this same index 0, 0, store 10. Now go for the next index. Take 2 from here, take 8 from this matrix. Add both these elements, that will result 10. So at the same index, that is 0, 1, store 10. Similarly for this, similarly for all the elements. Okay. Now let's see the code. So the same thing, if the row numbers or column numbers are not same, then we have to return or print -1. Why returning from here? Why returning from here? Because if you don't return, then your code, your control will go to this part of the code. And we don't want to execute this part of the code if these conditions are not satisfied. Otherwise, what will come? Array out of bounds exception. If row numbers and column numbers are not same, and you are not returning also from here, then will your control come to this part of the code? And do we want this part of the code to execute in this situation where row numbers are different? Either row numbers are different or column numbers are different? No. So in that case, what we will be doing is we will have to use this return. Okay. And at the same time, we have to print -1 also, showing that we can't add two matrices for having these dimensions. Now we will be making a resultant array. Okay, we'll be making a resultant array, and in that array, what we have to do is we will go through each indexes, starting at a particular row, then going through all the column values, adding matrix of row column and matrix 2 of row column. Whatever values present at a particular row column value in matrix 1 and matrix 2, add them up and store them where? At the same index in this resultant array. And at the same time, you need to print it. You need to print it. Okay. Now tell me, is it necessary? Can we do this without making this resultant array also? Can we do the same thing without making resultant array also? बिना resultant array बनाए क्या हम इस sum को print करा सकते थे? Yes, we could have done so. Because just we need to print the values. We just need to print the values. So what I'll be doing is we'll adding up both these values. And instead of this, I will place this part, whatever I have done blue, that can be placed here, and it will go on for printing. Okay. But if the question was to return a 2D array of answer, so in that case, we had to make a resultant array and then go on for printing it in this main function. Is it okay? Is it clear? Now tell me the space and time complexity of this question. Time and space complexity of this question, which is basically, I'm asking auxiliary space. Space complexity in terms of auxiliary space for this particular code. Can you analyze the time and space complexity?
n square. Time or space? Mention that too. Time, okay. And auxiliary space? That is basically space complexity. Do you know auxiliary space? Auxiliary space means extra space which you are using in your code. N square time, that is okay. N square you can't say, row numbers and column numbers are different, so you have to write row into column, not n square. Okay, Sagar? Since the input is in terms of R1 and C1, so you need to write R1 into C1 as the time complexity. Now, for the auxiliary space, you will be checking what all extra things you have made in this part of the code. Have you made this resultant array as the extra? Was it given in the question or was it given in the main function? Auxiliary space मतलब extra space जो हम ले रहे हैं अपने आंसर को evaluate करने के लिए. So we are creating this resultant array as extra. And what are its dimensions? R1 into C1. इसका dimension R1 into C1 है. Yes. So that would become the space complexity again. Space complexity भी क्या हो जाएगी? R1 into C1. Time complexity also R1 into C1 and space complexity also R1 into C1. Although you can like neglect the space complexity without making this resultant array, simply printing this. If you use this case also, then like it would work. Without, in that case, just like row into column, time complexity and big O fun space complexity. Again, Asmail, you are also writing the same thing. Don't write n square. We are dealing with row and column numbers. So write row R1 into C1 or row number into column number. Okay. R1, you're taking your first loop till R1, taking your second loop till C1. So time complexity will be R1 into C1. Okay. So any more questions that was done today or just this? I think only these questions were done today. Okay, there's spiral matrix. This is very good question. And then how many questions are left? Interchange the row, transpose of matrix, reverse rows of matrix. These questions are long. Okay. You can try out this question. Let me see whether you can try it out or not. Do you know reversing an array? Do you know reversing an array? मैम पैरामीटर में हम बस मैट्रिक्स पास करें तो चलेगा या नहीं? हाँ चलेगा. If you are just printing matrices in the, you are asking in this question. Okay, let's take this part of the code. You are asking कि हम पैरामीटर में सिर्फ क्या करें पास, सिर्फ मैट्रिक्स पास करें. But in that case, you need R1 and C1. The number of rows and columns will be required, right, for looping. So in that case, you will have to like calculate it by yourself. And how will you calculate the number of rows in a matrix? Just keep a note of this, how to calculate the number of rows and number of columns in a particular matrix. The number of rows, number of rows are calculated by using, for example, the name of the matrix is MAT. So matrix dot length. Okay, that means matrix dot length will be giving you the number of rows, and the number of columns will be given by what syntax? Matrix of zero dot length. Matrix of zero dot length. That means go to the 0th row of this matrix and find the length of that particular array. That means go to the 0th row of this matrix and find the length of that particular, because this itself is an array. This itself is an array. If you go at 0th index, this itself is an array. So you can find by using dot length function again. But will you write only on matrix? No, matrix of 0. You are going to at a particular index. You could have written 1 to anything here, but I have written 0. Okay, a valid index, but a valid row number. Okay, so this is the syntax which you need to follow. If एक बार code show करो. Code show करो means discussion में show करूँ, or should I write by myself? क्या
ओके, सी द कोड। यहाँ पे फिर हमें R1 C1 खुद, अच्छा रेस्ट। मैम फिर जब हम MET MET1 एंड MET2 पास कर रहे हैं तो रो 1 अच्छा, और तो 1 कैसे तो ऑटोमेटिक पता ही लग रहा है ना। ऑटोमेटिक कैसे पता लग रहा है? अगर पास किया, फंक्शन में पास किया, तब तो पता लग रहा है कि जो मतलब मेन से आपने पास किया वो यहाँ पे वैल्यूज रिसीव हो गई और आप उनको यूज कर रहे हो। पर अगर सिर्फ आपने मैट्रिक्स मान लीजिए सिर्फ ये दिया होता, ये R1 C1 R2 C2 ना दिया होता, तो आप कैसे कैलकुलेट करते? मैम पर क्योंकि एक बार कोड में ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पैरामीटर पास करें आप ये समझा दीजिए, MET1 किस लिए पास करा, MET2 और R1 C1 ये किस किस लिए पास करें। अच्छा, सी matrix 1 and matrix 2 are the two matrices which are passed to be compared। ठीक है, compared है या एडिशन आई डोंट नो, पर जो भी क्वेश्चन है उसमें 2 मैट्रिक्स मांगा है क्वेश्चन में। तो दोनों मैट्रिक्स का कुछ साइज होगा, कुछ रो नंबर्स होंगे, कुछ कॉलम नंबर्स होंगे। तो जितने नंबर ऑफ रोज है इन मैट्रिक्स 1 दैट इज डिनोटेड बाय R1। R1 ये डिनोट कर रहा है कि मैट्रिक्स 1 में कितने रोज हैं, और C1 ये डिनोट कर रहा है कि कितने कॉलम्स हैं मैट्रिक्स 1 में। और ठीक है, मैट्रिक्स 1 क्या डिनोट कर रहा है? मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है जो क्वेश्चन है। मतलब आपको 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा ना, आपने यहाँ पे इनपुट लिया बना बना के 2 मैट्रिक्स, राइट? तो यही मैट्रिक्स, बस यही पे जो आपने इनपुट लिया वही वाला मैट्रिक्स यहाँ से पास हो गया है, और वही मैट्रिक्स यहाँ रिसीव हो रहा है बस। इनपुटिंग फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने मैम एक मैट्रिक्स बना ली, और इनपुटिंग सेकंड मैट्रिक्स में हमने हाँ सेकंड मैट्रिक्स बना ली, और वो फिर पास दिस कर। लाइन, हाँ फिर उसमें वैल्यूज लेकर, इनपुट वैल्यूज लेकर फिर उसे पास करा दे रहे हैं इस फंक्शन में, हाँ। कि जो भी फंक्शनैलिटी या जो भी लॉजिक आपको लगाना है इस मैट्रिक्स का यूज करके आप लगा लीजिए, एंड दैट्स ऑल। जब हमने मैम दोनों मैट्रिक्स पास करा दी, MET1 एंड MET2, तो फिर हमें रोज एंड कॉलम्स पास कराने की क्या जरूरत है? See, in this question it is required to pass R1 C1 and R2 C2, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि रिजल्टेंट एरे आपको कितना साइज का बनाना है, आपको लूप कहाँ तक चलाना है, कैसे पता चलेगा? इनका डायमेंशंस आपके पास होना चाहिए ना, तभी तो आप इसको यूज कर पाओगे। कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स 1 में कितने रोज हैं और हमें कहाँ तक प्रोसेस करना है? तो एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से स्ट्रेट अवे जो भी जितने भी साइज का आपने मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 बनाया वो पास कर दो। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको डायमेंशंस नहीं पास करने हैं, तो देयर इज सम अदर वे, दैट इज व्हाट यू कैन डू इज, माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? विजिबल। हाँ, तो व्हाट यू कैन डू इज फॉर R1 कैलकुलेट मैट्रिक्स 1 डॉट लेंथ। ओके, तो R1 मिल जाएगा। फिर C1 इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 ऑफ 0 डॉट लेंथ। तो आपको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का डायमेंशन मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर आपको R2 के लिए करना है, लाइक M2 के लिए करना है, तो इसको R2 C2 बना दो। मतलब लीड कोड वगैरह पे अगर क्वेश्चंस किया होगा तो वहां पे ऐसे ही रहता है, सिर्फ मैट्रिक्स दे देंगे, आपको डायमेंशंस खुद से निकालना पड़ेगा। ओके मैम। इस तरीके से। But here, since in the HackerRank we are designing the main function also, so it is in our hand whether to pass the parameters or not. So we can pass the parameters as such. ओके। Okay. So any more doubts? So I'm done with these all these questions. I think only this 5 questions was discussed, or any other question was also discussed. Please write in the chat. Okay, sir, I think. No more questions? Okay, apart from this, if you have any doubt, you can ask. Either from any subject or anything, you can ask. मैम SDE1 और MUN में क्या डिफरेंस है? See, SD1 is a position in a company. Okay, SD1 means software development engineer 1. तो Okay, that means as a fresher. उस पोजीशन में मन वाला ही तो काम होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कंपनी किस टैक स्टैक पे काम करती है। Because many companies work, for example, MERN, some can work on Java, some can work on Python, some can work on DevOps, C#, anything. You don't know. Like whenever you are recruited by a company, then you should know DSA and all, and based on it, you will be given a role. For example, you are given a role SD1. जब आप उस कंपनी में जाते हो तो वो आपको कुछ टेक स्टैक बताएंगे कि हम इस टेक स्टैक पे वर्क करते हैं, तो उसमें से MERN हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर वो आपको टाइम देंगे कि आप इसको पढ़ लीजिए। तो आफ्टर लाइक they'll give you 1 month time, or probably I don't know,
it depends upon your capability, and फिर आप उस पे काम करते हो, ऐसा होता है। तो MERN स्टैक एक टेक स्टैक है, मतलब कि उस पे काम होता है, और SD1 एक पोजीशन होती है कंपनी में। मैम आप मानो मीनो? Like I'm just a front end developer like right now, but like as such कुछ development में नहीं किया, I've just focused on DS and all, and like recently I cracked Amazon's internship. मैं भी फ्रंट एंड ही हूँ, इसीलिए पूछ। हाँ, तो ज्यादा डेवलपमेंट भी मैंने नहीं की है, just focused on DSA for just because this product based companies focus more on DSA, like they focus 20% on your project, but 80%, not even entirely 20%, 80% DSA, 10% project and 10% OOPS, OOPS, मैम DBMS तो and जब OS. बाद में जब कंपनी में एंटर्ड हो जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, सर बता रहे थे कि डीएसए का यूज बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं तो होता। तो फिर क्या फायदा है कि मतलब 80% डीएसए के बारे में? फायदा ये होता है कि डीएसए से आपकी सोचने की कैपेबिलिटी पता चलती है, हाउ फार यू कैन थिंक, व्हाट इज योर थिंकिंग कैपेबिलिटी, सो कंपनीज गेट टू नो अबाउट योर थिंकिंग कैपेबिलिटी, एंड सो डीएसए इज द बेस्ट पैरामीटर recognized till today which can be used to judge a candidate. So for that purpose, even अगर आप कंपनी में घुस जाते हो एक बार और आपको फिर आप स्विच करना चाह रहे हो या SD2 SD3 पोजीशन पे जाना चाह रहे हो, फिर भी आपको डीएसए रिक्वायर्ड होगा, मतलब कंपनी में आप डीएसए पे काम नहीं कर रहे हो, पर आपको डीएसए साइड बाय साइड पढ़ते रहना होगा अगर आप प्रमोशन चाहते हो SD2 SD3 पोजीशंस पे जाने के लिए। मैम काम हमें मन पे करना है, और वो तो उस चीज पे इतना मन पे नहीं, जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स नहीं। ऑन विच। हाँ, ये सब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मतलब कि कोई भी कंपनी अगर मन पे काम कर रही है तो मन से ज्यादा डीएसए को प्रायोरिटी देती है। आप मन पे तो कंपनी में जाओगे तब काम करोगे ना, नॉट ओनली वन, एनी अदर सच टेक्नोलॉजी, पर डीएसए में इज यूजफुल फॉर जस्ट क्रैकिंग द कंपनी, फॉर क्रैकिंग द कंपनी कैन से। और ऐसे नहीं कह सकते कि डीएसए बिल्कुल यूज नहीं होता, इनडायरेक्टली लाइक डीएसए मैप्स लिस्ट ये सारी चीजें इनडायरेक्टली यूज होता है, यू कांट से एंटायरली, बट हाँ ऐसा सीधा डीएसए नहीं यूज होता है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग फॉर फाइंडिंग वेदर द मैट्रिसेस आर आइडेंटिकल, ये सारी चीजें नहीं होती। मैम बैकएंड के लिए आपको यूट्यूब वीडियो सजेस्ट कर सकते हो? Backend code with Harry you can see, and there is a Thapa technical channel. I like personally like this channel. You can go for it. Thapa technical and code with Harry. उसकी तो मैम दोनों की मैंने देख ली है सारी। कोई और तो फिर मुझे खोजना पड़ेगा, मैं देखूंगी और बता दूंगी अगर मिलता है कुछ अच्छा तो। ओके मैम, थैंक यू। Okay. Any other doubt? नो मैम। Okay. I'm asking to others. Any other doubt? Anybody? Thapa best. Yes, I also find Thapa is best. Shivaji. Any other doubt? Or shall I end? Okay. Nobody has doubt, I think. So we can end here. Okay. Bye-bye. Good night.